Friends, welcome to my channel. Here I am going to discuss about heterosis breeding, its principles and basis. Heterosis means when the F1 hybrid from a cross is superior to both the parents for yield or some other trait, the phenomena is called heterosis. मतलब जब भी हम क्रॉसेस बनाते हैं F1 हाइब्रिड अपने कोई भी पेरेंट से सुपीरियर परफॉर्मेंस शो कर रहा है तो दैट इज़ नथिंग बट हेटेरोसिस. Phenomena in which hybrid progeny of two inbred varieties exhibits enhanced growth or agronomic performance. हेटेरोसिस को यू हेटेरोसिस और ट्रू हेटेरोसिस के नाम से भी जाना जाता है एंड इसको फर्स्ट टाइम दिया था चार्ल्स डार्विन ने. मतलब चार्ल्स डार्विन ने फर्स्ट टाइम द प्रोसेस ऑफ हेटेरोसिस ऑब्जर्व किया था इन द ईयर 1876 और इस पे वर्क किया था शल एंड ईस्ट ने 1908 में. टर्म हेटेरोसिस को कॉइन किया था शल ने इन 1952 एंड ही कॉल्ड इट एज स्टिमुलेशन ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी. कंजर्व ऑफ हेटेरोसिस इज इनब्रीडिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम फिनोमिना. मतलब अगर आप एक कॉइन लेंगे उसका कैसे दो फेजेस होते हैं जैसे ही हेटेरोसिस एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन है. हेटेरोसिस मतलब जब हम हाइब्रिड्स बनाएंगे तो उसके कॉम्बिनेशन से एक नया प्रोडक्ट आ जाएगा एंड दैट विल एक्सप्रेस द ट्रेमेंडस जेनेटिक विगर. बिकॉज ऑफ दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी हाई. तो वो हो गया हेटेरोसिस. ठीक है. और उसका ऑपोजिट टर्म है इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन टर्म को समझने से पहले आपको दो टर्म्स और समझना होगा. एक इनब्रेड है एंड एक इनब्रीडिंग है और उसके साथ में इनब्रीडिंग डिप्रेशन है. इनब्रेड्स जैसे आप जानते हैं होमोजाइगस लाइंस होते हैं जिसको कंटिन्यूअस सेल्फिंग या सिब मेटिंग से बनाया जाता है. ओके. तो द बेसिक पर्पस ऑफ मेकिंग इनब्रेड्स. तो इनब्रेड्स अगर हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स की बात करते हैं तो तभी हम इनब्रेड्स की बात करते हैं बिकॉज these are just like varieties in self pollinated crops but we cannot say exactly they are varieties because जैसे आप जानते हैं varieties को जनरल कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे आप जानते हैं राइस के बहुत सारे varieties आए डायरेक्टली हमने फील्ड में ग्रो कर लिया या उसको वाइल्डली अडॉप्ट कर दिया. लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई इनब्रेड फील्ड में लगा दिया और उसका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है. ओके. इनब्रेड्स आर नॉट मेंट फॉर द जनरल कल्टीवेशन बट द ओनली मतलब है इनब्रेड का कि इसको हाइब्रिड बनाने के लिए ही यूज़ करते हैं. ठीक है. तो जब बेटर इनब्रेड्स बनाए गए उसी टाइम में बेटर डबल हाइब्रिड्स और मतलब सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स डबल क्रॉस हाइब्रिड्स ये सब बनाने में बहुत ही हेल्प हो गया. तो इनब्रीड्स के बारे में मैंने बता दिया. अब इनब्रीडिंग के बारे में बताती हूँ. इनब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअस सेल्फिंग या सीबिंग से ये एक प्रोसेस है. ठीक है. जैसे सेल्फिंग होता है. सेल्फिंग में क्या करते हैं कंटिन्यूअसली वो एक ही प्लांट का पोलन लेंगे और उसी के ओवर या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मेट करेंगे तो वो क्या हो गया सेल्फिंग हो गया. तो इनब्रीडिंग क्या होता है ये एक प्रोसेस होता है जो सेल्फिंग या सिबिंग बना के मतलब इन आर्टिफिशियल मीन हम बनाएंगे तो उसके हिसाब से क्या होता है उसमें होमोजाइगोसिटी एंड होमोजीनिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जनरली 6 to 7 जनरेशन में बढ़ जाता है. ओके. अब देखते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है. जब हम कंटिन्यूसली इनब्रीडिंग करते जाते हैं जैसे आप जानते हैं क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब है कि वो दैट लव्स टू बी वेरी फ्री इन नेचर. मतलब किसी भी प्लांट से वो रैंडम मेट करने के लिए बहुत ही हमेशा खुश रहता है. लेकिन अगर उसको हम बांध दें मतलब कंटिन्यूसली सेल्फ करें तो वो बेचारा बहुत ही दुखी हो जाएगा. वो है डिप्रेशन काइंड. तो इसी को इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं. अगर हम प्लांट ब्रीडिंग के सेंस में बात करें तो इनब्रेड्स को कंटिन्यूसली सेल्फ या सिब करते जाएंगे तो उसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ते जाएगी. उससे क्या हो जाएगा उसके कैरेक्टर को धक्का लग जाएगा. मतलब वो हमेशा हेट्रोजाइगस नेचर में रहने के लिए ट्राई करता है लेकिन अब हम उसको ज़बरदस्ती से होमोजाइगोसिटी में खींच के ला रहे हैं तो वो डिप्रेस हो गया. तो यही होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन. मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ लीथल एंड सबलीथल alleles in the lines because of the continuous inbreeding so that the performance and vigor of that particular line will be declined
ईयर आफ्टर ईयर। तो यही होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और ये दो टर्म्स है जिनका बिल्कुल अलग मीनिंग होता है। जैसे मैंने आपको बताया है, हेटेरोसिस एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन आर द टू फेसेस ऑफ ए सेम कॉइन। ठीक है। After maize hybrid was first utilized in field on a large scale in USA in 1930s, heterosis of other crops like rice, sorghum, rapeseed, vegetables, etc. began to be widely used in production and had made great achievements in crop breeding that they ended in last century mainly contributed to notable increase in the crop yields। मतलब हेटेरोसिस का एरा शुरू हुआ था 1920 से, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोसेस या इसका पॉपुलैरिटी स्टार्ट हुआ था 1930s में। तब से आज तक भी हेटेरोसिस काफ़ी पॉपुलर है बिकॉज ये नेचुरल विगर को हार्नेस करता है और इसके वजह से ईल्ड या बहुत सारे ट्रेड्स में हम बदलाव ला पाए हैं। ओके, एंड दिस इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं हेटेरोसिस में डिफरेंट टर्म्स होते हैं, तो उसके हम मीनिंग्स देख लेते हैं। ऐसे मैंने बताया था, हेटेरोसिस होता है F1 मीन लाइज आउटसाइड द पेरेंटल रेंज। ठीक है, और इस टर्म को मोस्ट वाइडली यूज़ करते हैं। ट्रू हेटेरोसिस और यू हेटेरोसिस, ये क्या होता है, F1 मीन लाइज आउटसाइड द पेरेंटल रेंज, और इन टर्म्स को रेयरली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हेटेरोसिस के ये सिनोनिमस टर्म्स हैं। नेक्स्ट आएगा हेटेरोबेल्टोसिस। बेल्टोसिस का मतलब क्या होता है, F1 सुपीरियर टू द सुपीरियर पेरेंट, मतलब बेटर पेरेंट से भी अच्छा है, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोबेल्टोसिस। फिर आएगा हाइब्रिड विगर, इसका मतलब है F1 सुपीरियर टू द सुपीरियर पेरेंट। उसके बाद में आएगा एवरेज हेटेरोसिस, मिड पेरेंट हेटेरोसिस, रिलेटिव हेटेरोसिस। ये होता है F1 सुपीरियर टू और इन्फीरियर टू द मिड पेरेंट वैल्यू। एक्सटेंसिवली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव जेनेटिक एनालिसिस। फिर टर्म्स आएंगे इकोनॉमिक हेटेरोसिस, स्टैंडर्ड हेटेरोसिस एंड यूजफुल हेटेरोसिस। इकोनॉमिक या स्टैंडर्ड हेटेरोसिस की बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन है F1 सुपीरियर टू द बेस्ट कमर्शियल वैरायटी ऑफ द क्रॉप। तो जब हम कोई भी ट्रायल्स लेते हैं तो क्या करेंगे, चेक्स के साथ लगाते हैं। चेक्स होते हैं परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, तो जब हम हाइब्रिड लगाएंगे उसके बगल में एक चेक भी लगाएंगे जो लोकली एडाप्टेड रहता है। अगर हमारा हाइब्रिड 10 से 30% या उससे ज़्यादा उस चेक से बेटर परफॉर्म कर रहा है तभी वो मार्केट में आ पाएगा, नहीं तो वो जनरल कल्टीवेशन के लिए सूटेबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस टर्म में स्टैंडर्ड हेटेरोसिस या इकोनॉमिक हेटेरोसिस एंड यूजफुल हेटेरोसिस को माना जाता है। और जब भी हम हेटेरोसिस की बात करते हैं, हेटेरोसिस को कैलकुलेट करके उसको इंटरप्रेट करके कोई भी लाइन को डिसाइड करते हैं, यस दिस इज़ द वन विच इज़ सुटेबल फॉर जनरल कल्टीवेशन, वो बेसिकली होता है बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक हेटेरोसिस और स्टैंडर्ड हेटेरोसिस, और उसको यूजफुल हेटेरोसिस भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है म्यूटेशनल हेटेरोसिस। इसका मतलब होता है हेटेरोसिस प्रोड्यूस्ड बाय डोमिनेंट जीन एक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिटिल रिलेवेंस इन प्लांट ब्रीडिंग एज इट कैनॉट बी एस्टिमेटेड। मतलब म्यूटेशनल हेटेरोसिस को हम एस्टिमेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम जब 2 पेरेंट लेते हैं तो उसका पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन हमको पता करना काफ़ी मुश्किल है। मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेटेरोसिस में एक्सप्लेन किया है। तो जब हेटेरोसिस होने के लिए मिथाइलेशन पैटर्न में चेंज हो सकता है या एपिजेनेटिक कोई चेंजेस हो सकते हैं, आरएनए के टर्म्स में चेंज हो सकते हैं या हिस्टोन मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, तो हम उसको एग्जैक्टली पता नहीं कर पाते हैं। जब तक हम मार्कर बेस्ड स्टडी नहीं कर पाते तो उसका एग्जैक्ट कॉज हम पता नहीं कर सकते हैं। ओके, that's why mutational heterosis is rare term. Next है balanced heterosis। ये होता है heterosis due to overdominance gene action। इसको मेज में हार्नेस किया है। ये भी लिटिल रिलेवेंस है प्लांट ब्रीडिंग से, क्योंकि बहुत ही कम क्रॉप्स में बैलेंस्ड हेटेरोसिस को ऑब्जर्व किया गया है। In 1766, Colruyter was the first scientist who made systematic experiments on hybrid vigor in Nicotiana. He demonstrated that hybrids resemble both the parents and verified the genetic contribution of pollen. In 1799, Knight gave the principle of anti-inbreeding.
He demonstrated dominance and segregation in the garden pea, but failed to make the brilliant leap of Mendel, who initiated fruit breeding. That means before Mendel only Knight attempted the concept in garden pea, but after that he shifted to fruit breeding. So Knight is famous for his hybridization principles in fruit breeding. In 1865, Mendel worked with the garden peas and he made hybridization in garden pea. In 1876 and 77, Darwin came. He wrote one book, that is Effect of Cross and Self-Fertilization in Vegetative Kingdom. That book gave emphasis on outcrossing for more vigorous and better survival. Cross-pollination is generally beneficial and self-pollination usually is injurious in cross-pollinated crops, but in case of self-pollinated crops, it is quite beneficial to maintain their genetic integrity. Cross-fertilization is beneficial, discussed variability and evolution, but doesn't have a rational genetic explanation. In 1880, Beale, who first published the report of 51% increase in yield over parents. In 1891, Johansen made pre-Mendelian explanation for hybrid vigor. In his experiment, he made inbreeding both the parents likely to possess same imperfections by inheritance, that is, crossing gave better offspring or better progeny than the selfing process. This further intensified in the progeny. In crossing, the parents usually have different imperfections which compensate each other in the progeny. In the year 1892, MacLear, who worked with inbreeding, imparted sterility and crossing imparted vigor. According to MacLear, inbreeding से sterility होता है and crossing imparted vigor, मतलब crossing से हम vigor gain कर सकते हैं. In 1917, Jones, who produced first commercial hybrid, that is Burr-Leamington. In 1918, he made hybrid seeds from the double cross and they were as much as the single cross yield. In 1933, Rhodes, who discovered the male sterility in maize. In 1943, Jones and Clerk made commercial exploitation in hybrid seed production of onion. In 1934, Jenkins, who made large-scale screening and testing the GCA of inbreds and prediction of the performance of double-cross hybrids from single-cross data. In the year 1942, Tisdale made polycross technique. In 1944, Stadler made gametic selection. In 1945, Hull coined the term overdominance along with Crew in 1948, and Hull made recurrent selection for GCA concept. In 1949, Chase outlined the use of monoploids to obtain completely homozygous inbred lines in maize. In 1952, Gowen suggested that epistasis may also be involved in heterosis and inbreeding depression. Coming to the development of heterosis concept, that means the scientists who exactly worked for the concept of heterosis. The first scientist was Simpson in 1907, who made rejuvenation by hybridization. In 1908, Davenport gave dominance theory, which is the first theory in the genetic basis of heterosis. As you know, in the genetic basis of heterosis, there are three principles. One is dominance or partial dominance, then overdominance, and the third one is epistasis theory. In 1903, Fisher, who first put forth the idea of overdominance. In 1908, East and Shull gave overdominance theory. In 1912, East and Hayes, who gave stimulus of heterozygosis, that is, crossing produces heterozygosis and selfing leads to homozygosis. In 1914, Shull coined the term heterosis. In 1918, Jones gave the practical utilization of heterosis hybrid vigor, as hybrid vigor is the synonymous term to Shull's hypothesis, but hybrid vigor is always associated with positive heterosis, that means increased leaf size or leaf area index along with increased yield or increased flower size.
but not with the negative terms like decreased height or decreased duration of life, all those things. In 1927, Karpencheko, who developed new species from hybrid between Raphanus and Brassica. In 1944, Power gave positive and negative heterosis. In the same year, Powell gave the Epistatic Hypothesis, and in 1959, Williams also gave the concept of Epistatic Hypothesis. In 1949, Mather, who gave homozygous and heterozygous balance, the theory is to explain the varied responses of different species to inbreeding. In the year 1950, Dobzhansky gave different terms, like first one is euheterosis, where the hybrids possess higher fitness than their parents. Luxuriance is the another term which is relevant to heterosis, but heterosis is related to the genetic vigor, whereas luxuriance is just the vigor in morphological characters but not in terms of fitness. In 1964, Yang Long Ping, who initiated research on the hybrid rise and heterosis in China. In 1968, Wallace gave marginal overdominance concept. In 1968 only, Blitzer gave heterobeltosis term, which increased the performance of hybrids over better parent. In 1875, Wilson reported first hybrid between wheat and rye. In 1889, Rimpu produced first double fertilized hybrid, that is triticale. Then in 1976, Mackey, who gave different concepts like adaptive heterosis, selective heterosis, heterosis for competitive ability, then luxuriant heterosis, labile heterosis and fixed heterosis. आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ हेटेरोसिस। तो फीचर्स क्या क्या है, एक तो सुपेरियरिटी ओवर पेरेंट्स, जैसे आप जानते हैं कोई भी हम हाइब्रिड्स ले, मतलब ऐसा नहीं है कि हर हाइब्रिड बहुत ही सुपीरियर होगा। अगर आप 10,000 हाइब्रिड्स बनाएंगे तो 2 या 3 ही उसमें होंगे जो मल्टी लोकेशन ट्रायल्स में और मल्टी ईयर ट्रायल या मल्टी सीजनल ट्रायल में बहुत ही अच्छा शानदार परफॉर्मेंस रहेगा। उसी की वजह से उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और जनरल कल्टिवेशन के लिए प्रमोट करेंगे। तो सिर्फ कोई हाइब्रिड्स होते हैं जो पेरेंट्स से बहुत ही सुपीरियर होते हैं, लेकिन ऐसा है तो अगर मिलेगा तो बहुत ही शानदार मिलेगा हाइब्रिड, और उसके वजह से हम बहुत ही सालों तक और बहुत ही अच्छा यील्ड पा सकते हैं। ओके, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ यील्ड, इन टर्म्स ऑफ एडाप्टेशन, क्वालिटी, डिसीज रेजिस्टेंस, मैच्योरिटी, जनरल विगर ओवर इट्स पेरेंट, इन सारे चीज़ों में ये सुपीरियर रहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है कन्फाइंड टू F1। जैसे आप जानते हैं हेटेरोसिस इज कन्फाइंड ओनली टू F1 जनरेशन ऑफ ए क्रॉस, इट डिक्लाइंस एंड डिसअपीयर इन F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशंस ऑफ ए क्रॉस एज ए consequence ऑफ segregation and recombination. Thus heterosis is related to F1 जनरेशन ओनली। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल दूँ मैं, अगर आप मार्केट में जाएंगे या किसी भी दुकान से जहाँ पे आपको सीड का दुकान है और वहाँ से आपने मान लीजिए कि आपने हाइब्रिड सीड ले लिया, ठीक है। अक्सर फार्मर्स के साथ यही दिक्कत होता है, वैरायटीज खरीदना और हाइब्रिड खरीदने में बहुत ही फ़र्क है। अगर कोई भी वैरायटी खरीद ले फार्मर तो उसको आसानी से वो 7-8 साल तक अपना ग्रो करते रहेगा, मतलब अपना इस साल कई से सीड ले लिया और उसका ही अपने लिए, मतलब अगले सीज़न के बुआई के लिए उसने कोई सीड्स अपने पास रख लिया और अगले सीज़न, मतलब सीज़न टू सीज़न ऐसे ही रखते रखते वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाइब्रिड्स में ऐसी बात नहीं है। जैसे आप जानते हैं अगर बीटी कॉटन का ही कोई वैरायटी लो, या आप आजकल मेज़ के बहुत सारे हाइब्रिड्स आ गए हैं मार्केट में, अगर उनको आप ला के फील्ड में बोएंगे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दैट शुड परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट जनरेशन, अगर आप रख के उसी सीड को रख के नेक्स्ट जनरेशन में F1 के बाद F1 को फील्ड में यूज़ कर रहे हैं तो दैट में नेवर परफॉर्म इन ए बेटर वे, मतलब आप उसमें सेग्रीगेशन आ जाएगा। बेसिकली जैसे आप जानते हैं, अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊँ तो अगर हम A लेंगे और A लेंगे तो क्या आ जाएगा, F1 में आपको ये आ जाएगा, और जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमको ये मिलता है। ओके, एंड दिस इज़ वेरी बेस्ट परफॉर्मिंग, ठीक है।
जब हम F2 में जाएंगे, मतलब इसी का थोड़े से सीड्स ओपन पॉलिनेट करके या किसी भी तरीके से आपने पॉलिनेट करके उसको रख लिया, तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन रूल 1:2:1 में वो सेग्रीगेट हो जाएगा, तो आपको होमोजाइगस बहुत ही कम मिलेगा, मतलब जो बेटर परफॉर्मिंग सिर्फ आपका एक पार्ट ही अप फ्रॉम 25 to 50% रहेगा और वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। नेक्स्ट फीचर है जेनेटिक कंट्रोल। द एक्सप्रेशन ऑफ हेटेरोसिस इज गवर्न्ड बाय न्यूक्लियर जीन। फिर रिप्रोड्यूसिबल, हेटेरोसिस वंस आइडेंटिफाइड कैन बी इजीली रिप्रोड्यूस्ड इन ए डेफिनेट एनवायरनमेंट। इसका मतलब है, जैसे अगर आप सिंथेटिक्स एंड कॉम्पोजिट्स की बात करेंगे तो एग्जैक्ट रिकन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब हम सिंथेटिक्स एंड कॉम्पोजिट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो एक पॉपुलेशन होता है। लेकिन अगर हम हेटेरोसिस सिंगल क्रॉस हाइब्रिड में बात करते हैं तो उसको हम इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब जहाँ भी हेटेरोसिस कब बनता है, जब हम हाइब्रिड्स बनाते हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, वहाँ भी सिंथेटिक्स एंड कॉम्पोजिट्स में क्या करते हैं, 8 to 10 पेरेंट्स या जितने भी 16-17 पेरेंट्स ग्रासेस में लेते हैं, वैसे लेके हेटेरोटिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो अगर हम उसका एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन, जैसे कि सिंथेटिक्स और सिंगल या डबल क्रॉस हाइब्रिड्स में, उसको हम फिर से बना सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी। The magnitude of heterosis is associated with heterozygosity because the dominance variance is associated with heterozygosity. हेटेरोसिस का और एक फीचर है, ये हेटेरोजाइगस बैलेंस को हमेशा रखता है। देन यील्ड इंक्रीज होता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी इंक्रीज होता है, साइज एंड विगर इंक्रीज होता है, क्वालिटी अच्छा मिलता है, अर्ली फ्लावर एंड मैच्योरिटी पा सकते हैं, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू डिसीज एंड पेस्ट पा सकते हैं, ग्रेटर एडाप्टिबिलिटी, मतलब अलग अलग जगह में ये एडाप्टिव हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बायोकेमिकल बेसिस ऑफ हेटेरोसिस में बताया है कि एक सप्लीमेंट्री एक्शन होता है जिसके वजह से रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं हाइब्रिड्स में। या एडाप्टिबिलिटी, मतलब एक मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे कि 50 फ़ारेनहीट या 80 फ़ारेनहीट में पेरेंट्स कंपैटिबल है, लेकिन अगर हम हाइब्रिड्स बनाएंगे तो वो हाइब्रिड 50 to 80 फ़ारेनहीट रेंज का कोई भी टेम्परेचर में अगर आप ग्रो करेंगे किसी भी एनवायरनमेंट में, तो उसमें वो ग्रो हो पा रहा है। ओके, देन फास्टर एडाप्टिबिलिटी, देन इंक्रीज इन ए नंबर ऑफ प्लांट पार्ट। कमिंग टू द मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेटेरोसिस, बेसिकली 3 मेथड्स को कंसिडर किया जाता है। एक मिड पेरेंट हेटेरोसिस है, देन बेटर पेरेंट हेटेरोसिस एंड स्टैंडर्ड हेटेरोसिस। तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फार्मूला के लिए यहाँ पे फिर से मेथड्स डिस्कस कर रही हूँ। तो फर्स्ट है मिड पेरेंट हेटेरोसिस। तो इसमें क्या होता है, व्हेन द हेटेरोसिस इज एस्टिमेटेड ओवर द मिड पेरेंट, दैट इज मीन वैल्यू और एवरेज ऑफ द 2 पेरेंट्स। यहाँ पे देखिए F1 क्या होता है, F1 हो गया आपका फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फिर मीन ऑफ द मिड पेरेंट्स लेंगे हम, तो मिड पेरेंट हेटेरोसिस कैलकुलेट करते वक्त F1 के मीन से हम मिड पेरेंटल मीन को डिडक्ट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे मिड पेरेंटल वैल्यू से और इनटू 100, मीन्स दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। नेक्स्ट इज बेटर पेरेंट हेटेरोसिस। ये क्या होता है, हेट्रोबेल्टोसिस भी इसको बोलते हैं, व्हेन द हेटेरोसिस इज एस्टिमेटेड ओवर द बेटर पेरेंट। ठीक है, तो इसका फार्मूला है F1 माइनस बेटर पेरेंट मीन। यहाँ पे सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ मीन में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे F1 का मीन लिया गया है, फिर बेटर पेरेंट का मीन लिया गया है और फिर से मीन, तो इनटू 100। ये हेट्रोबेल्टोसिस टर्म बिट्जर ने दिया था 1968 में टू डिस्क्राइब द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेट्रोजाइगोट ओवर द बेटर पेरेंट इन द क्रॉस। थर्ड स्टैंडर्ड हेटेरोसिस, जैसे इसको इकोनॉमिक हेटेरोसिस भी बोलते हैं। एक सुपीरियर चेक के ऊपर अगर हेटेरोसिस दिख रहा है तो उसको स्टैंडर्ड हेटेरोसिस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला बोलता है कि F1 मीन माइनस चेक मीन डिवाइडेड बाय चेक मीन इंटू 100। इसको
स्टैंडर्ड हेट्रोसिस के टर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि F1 माइनस स्टैंडर्ड हेट्रोसिस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड पेरेंटल मीन इनटू 100. ओके, तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाई हेट्रोसिस इज एक्सप्रेस्ड विथ जेनेटिक बेसिस. हमेशा हेट्रोसिस ट्रेट स्पेसिफिक होता है, जैसे कि सम ट्रेट्स ऑफ FN may show heterosis while others may not. Heterosis is generated in crosses between genetically distinct individuals or lines. It seems to involve many loci and a variety of different mechanisms. Different genes for heterosis may affect different traits of the hybrid. There may be substantial difference in the genetic basis of heterosis in different crops. मतलब the extent or level of heterosis crop to crop में vary करता है. ये depend करता है कि self pollinated crop है, cross pollinated है या often cross pollinated crops है, और specific trait पे भी depend करता है, जैसे कि flowering character है या yield है, इस type में differ करता है. The extent of heterosis is much higher and its expression is more widespread in maize than in other plants. One reason for the greater expression of heterosis in maize may be the large amount of diversity in genome sequence of different inbred lines of maize. The sequence variation in maize includes single nucleotide polymorphism, insertions, deletions, indels बोलते हैं, फिर presence और absence of genes, genomic segmental arrangements, फिर copy number variation, insertion of transposable elements. On an average, one polymorphism would be observed at every 100 bp of the genome of any two maize inbred lines chosen at random. The genome sequence variation in other plant species are less frequent and consist mainly SNPs and small indels. इसका मतलब है मेज़ जो एक क्रॉप है जिसमें हेट्रोसिस काफ़ी वाइड स्प्रेड में एक्सप्लेन किया गया है और पाया भी गया है, ठीक है, क्योंकि मेज़ जैसे आप जानते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है. तो ये एक पिक्चर दिया गया है जिसमें हर टाइप ऑफ हेट्रोसिस को एक ही कॉमन प्लेस में लाने की कोशिश की गई है. जैसे आप जानते हैं P1 एंड P2 यहाँ पे दो पेरेंट्स हैं, ओके, and when we cross them we will get the F1. okay, जब F1 का कैरेक्टर इन बिटवीन द टू पेरेंटल कैरेक्टर है, मतलब ना वो इस पेरेंट के तरफ उसका कैरेक्टर शेयर कर रहा है या ना इसका कम्प्लीटली, बट द इंटरमीडिएट कैरेक्टर दोनों पेरेंट्स का शेयर कर रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ पार्शियल डोमिनेंस. ओके, जब अगर F1 is completely having P1 कैरेक्टर और P1 के तरफ अगर वो कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस इन पॉजिटिव टर्म, ठीक है. फॉर एग्जांपल इंक्रीज्ड विगर है या हाइट, कुछ इंक्रीज्ड विगर या कोई भी कैरेक्टर वेजिटेटिव कैरेक्टर है तो उसको P1 में हम देख रहे हैं तो वो कंप्लीट डोमिनेंस होगा इन पॉजिटिव वे. और इसमें भी P2 जो रेसेसिव कैरेक्टर है अगर मान लीजिए तब होगा वो भी कंप्लीट डोमिनेंस इन अदर डायरेक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि ये हो गया मिड पेरेंटल वैल्यू, ठीक है. जो मिड पेरेंटल वैल्यू पे F1 पड़ रहा है तो वो होगा पार्शियल डोमिनेंस. अगर वो रिसेसिविटी की तरफ मुड़ रहा है तो वो क्या हो गया, कंप्लीट डोमिनेंस इन नेगेटिव साइड. और दूसरा अगर वो BB और कैपिटल फॉर्म में शो कर रहा है उस पेरेंट के तरफ है तो वो पॉजिटिव हेट्रोसिस होगा. जब हाइब्रिड का परफॉर्मेंस F1 का परफॉर्मेंस बेटर पेरेंट से भी बढ़ के है वो होगा हेट्रोबेल्टोसिस. ओके, और ओवर डोमिनेंस क्या होता है, ओवर डोमिनेंस होता है जब वो दोनों पेरेंट्स का परफॉर्मेंस को एक्सीड कर रहा है या उनको ब्रेक कर रहा है और डिफरेंट ही कैरेक्टर शो कर रहा है जो दोनों पेरेंट्स से बिल्कुल अलग है, तो उसको बोलते हैं ओवर डोमिनेंस. टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक एक का डिफरेंस समझने का कोशिश कीजिए. ओके, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोसिस. जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो अब एक्सप्लेन करूँगी लग्जूरियंस क्या होता है. ओके, लग्जूरियंस होता है हाइब्रिड्स एग्जिबिट एक्सट्रीम हेट्रोसिस फॉर मोस्ट ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स.
hybrids was adaptively inferior, there was absence of heterosis for fitness. luxuriance का मतलब होता है बहुत ही ग्रोथ होगा, बहुत ही सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन होगा, लेकिन वो कैरेक्टर हेरिटेबल नहीं होगा, मतलब फिटनेस के टर्म में नहीं है, जस्ट फॉर द वेजिटेटिव और ग्रोथ पैटर्न में चेंज या इंक्रीज होना होता है लग्जूरियंस. इस टर्म को कॉइन किया था डॉब्जन्स्की ने 1950 में. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक स्यूडो हेट्रोसिस टर्म आता है. तो लग्जूरियंस को ही हम स्यूडो हेट्रोसिस बोलते हैं. यहाँ पे क्या होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कंसिडरेबल होता है, पुअर एडाप्टेशन एंड लो एडाप्टिव नेचर, यूजुअली नॉट सर्वाइव इन नेचुरल सिलेक्शन. मतलब वेजिटेटिव या जहाँ लग्जूरियंस होता है वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन फेवरेबल नहीं है, क्योंकि दैट विल एंड अप फॉर ओनली वन जनरेशन, इट वॉन्ट बी हेरिटेबल. नेक्स्ट है लेबाइल हेट्रोसिस. लेबाइल हेट्रोसिस को मैक्की ने दिया था 1976 में. तो इसका मतलब होता है हेट्रोसिस अंडर हेट्रोजाइगस जेनेटिक सिचुएशन विच ब्रेक्स डाउन इन सब्सिक्वेंट जनरेशन विच इज़ नॉट फिक्सेबल. लेबाइल मतलब एक जनरेशन में एंड अप हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है फिक्स्ड हेट्रोसिस, मतलब विच कैन बी फिक्सेबल बाय वेरियस मैकेनिज्म्स. फिक्सिंग हेट्रोसिस के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स है, वो एंड में मैं बताऊंगी. देन एडाप्टिव हेट्रोसिस. एडाप्टिव हेट्रोसिस का मतलब होता है विच रिप्रेजेंट्स हेट्रोसिस फॉर एडाप्टेशन और इंक्रीज्ड फिटनेस ऑफ द हाइब्रिड. इस टर्म को भी मैक्की ने दिया था, यहाँ पे ध्यान रखिए. लेबाइल हेट्रोसिस, फिक्स्ड हेट्रोसिस, एडाप्टिव हेट्रोसिस, तीनों टर्म्स को मैक्की ने दिया था 1976 में. अगर आपको साइंटिस्ट का कंप्लीट लिस्ट चाहिए तो एक और वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो उसमें कंप्लीट लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट रिलेटेड टू हेट्रोसिस दिया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है. नेक्स्ट इज the two other types are mutational U heterosis and balanced heterosis. Even though I discussed it earlier, लेकिन इसका definition एक बार मैं बता देती हूँ. Mutational U heterosis होता है deleterious recessive mutants which are adaptively inferior in homozygous state are sheltered from elimination of their adaptively superior dominant alleles in heterozygous state in natural population. The level of adaptation attained under this genetic situation is represented as mutational heterosis. बैलेंस्ड हेट्रोसिस होता है जहाँ पे हेट्रोजाइगोट स्टेट कन्फर करता है हायर एडाप्टिव वैल्यू ओवर पेरेंटल होमोजाइगोट. बेटर वायबिलिटी एंड मोर प्रोडक्टिविटी इज simultaneously better adapted for survival than the homozygotes in changing environment. There are different concepts of heterosis like genetic basis of heterosis, quantitative genetics of heterosis, molecular basis of heterosis, which is explained with the help of QTLs and heterosis, then gene expression and heterosis. Epigenetic basis of heterosis. Here I have included that in molecular basis of heterosis only because that is involved in the expression pattern of particular molecules. Then another one is biochemical basis of heterosis. Biometrical concept of heterosis, mainly based on nature of gene action, has contributed to the prediction of hybrid performance. For prediction, sets of inbred parents are taken under consideration. Coming to the dominance model, if we talk about the genetic basis of heterosis, we can divide it into dominant, overdominant and epistatic model. The dominance model states that heterosis may be complementing action of superior dominant alleles from both the parental inbred lines at multiple loci over the corresponding unfavorable alleles, leading to improved vigor of hybrid plants. Second one is overdominance model. This attributes heterosis to allelic interactions at one or multiple loci in hybrid that result in superior traits as comparing to their parents. Third one is pseudo-overdominance. That means the genetic intermediate of dominance and overdominance is pseudo-overdominance. मतलब ये dominance और overdominance का intermediate होता है. एक किससे बनता है? बिकॉज ऑफ द सिंपल डोमिनेंट कॉम्प्लीमेंटेशन एंड बिकॉज ऑफ द टाइट लिपर्शन फेज लिंकेज
एंड अपीयर्स टू बी ओवर डोमिनेंस, मतलब रियली ओवर डोमिनेंट नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ रिपल्शन फेज लिंकेज इसको ओवर डोमिनेंट की तरह एक्ट करने के लिए एनकरेज करता है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज एपिस्टेटिक मॉडल। दिस कंसिडर्स एपिस्टेटिक इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलिलिक जीन्स एट 2 or more loci as the main factor for the superior phenotypic expression of a trait in hybrids। एपिस्टेटिक मॉडल मतलब जीन इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन नॉन एलिलिक जीन्स और एलिलिक जीन्स। तो की फीचर्स बताऊंगी डोमिनेंस हाइपोथेसिस का। इसको डेवनपोर्ट ने 1908 में दिया था। इट्स ड्यू टू हेटेरोजाइगोसिटी पर से, सुपीरियरिटी ऑफ डोमिनेंट ओवर रिसेसिव एलील्स, जैसे मैंने बताया था ये एक कंपाउंड और इफेक्टिव रेट ऑफ डोमिनेंट एलील्स के कॉम्बिनेशन से बनता है डोमिनेंट इफेक्ट, ठीक है। हेटेरोसिस इज ड्यू टू मास्किंग ऑफ डिलीटेरियस रिसेसिव एलील्स बाय डोमिनेंट एलील्स। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स contributed by each parent। तो डोमिनेंस हाइपोथेसिस को कॉम्प्लीमेंटेशन हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। डोमिनेंस मॉडल को ऐसे डिस्कशन किया गया है जैसे कि P1 एक पेरेंट है जिसमें बहुत सारे होमोजाइगस जीन्स प्रेजेंट है, जैसे कि डोमिनेंट फॉर्म में भी है, रिसेसिव फॉर्म्स में भी है। और P2 एक दूसरा पेरेंट है जिसमें भी सेम कंडीशन में डोमिनेंस में भी है, फिर रिसेसिव कंडीशन में भी है। तो जब इन दोनों को हम क्रॉस करेंगे तो F1 में क्या आएगा, सब हेटेरोजाइगस आएगा। और इसमें क्या होगा कि जो डोमिनेंट अलील है वो रिसेसिव अलील के एक्सप्रेशन को मास्क करेगा। दैट इज़ द डोमिनेंस मॉडल एक्सप्लेनेशन। मीन्स कैंसलिंग ऑफ डिलीटेरियस और inferior alleles। Heterosis depends on number of dominant genes. Both parents should differ in dominant genes. Complementation across loci must be cumulative to produce a superior genotype. Then dominance is considered more popular one। अगर हम तीनों थ्योरी को लेंगे, डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस, डोमिनेंट हाइपोथेसिस मोस्ट एक्सेप्टेड एंड मोस्ट कॉमन है। इन डोमिनेंट हाइपोथेसिस कैरेक्टर्स को कैसे शो किया जाता है, जैसे देखिए होमोजाइगस डोमिनेंट है दैट इज इक्वल टू heterozygous, okay, and this heterozygous condition or dominant condition is dominant over the recessive one। एक एग्जाम्पल के साथ लिख देते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट का 10 वैल्यू है, हेटेरोजाइगस का 10 वैल्यू है एंड रिसेसिव का 0 वैल्यू है, ठीक है। तो इसी कॉम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से हम देखेंगे तो स्मॉल a जिसका वैल्यू है 0, ठीक है, एंड कैपिटल BB जिसका वैल्यू अगर आप 10 भी रख लेंगे क्योंकि कैपिटल का वैल्यू है 10 एंड स्मॉल का वैल्यू आप 0 रख लीजिए। तो ये क्या हो गया, CC अगेन 0 एंड DD अगेन 10। तो EE का क्या हो गया 0 क्योंकि रेसेसिव को हमने 0 वैल्यू दिया है, ओके। तो यहाँ पे आपको 2 डोमिनेंट मिल गए इन होमोजाइगस फॉर्म, सो द वैल्यू इज़ 20। अगर हम पेरेंट 2 में देंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 अलील्स कैपिटल फॉर्म में है, मतलब एक पेयर डोमिनेंट जीन जिसका 10 वैल्यू है, फॉलोड बाय ये रिसेसिव है तो इसका 0 वैल्यू होगा, और ये कैपिटल CC इसका 10 वैल्यू होगा, फिर ये रिसेसिव है जिसका 0 होगा, और ये डोमिनेंट है इसका 10 वैल्यू होगा। तो टोटल मिला के 10 10 10 तो 30 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का पेरेंट्स को हम अगर क्रॉस करेंगे तो हमारा F1 क्या आएगा, वो आएगा ऑल इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो आप देखिए हेटेरोजाइगस का वैल्यू क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इक्वलेंट टू होमोजाइगस डोमिनेंट, तो 10 हो गया। यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, ये है, ये है, ये है, तो टोटल 5 जीन्स है तो 5 का वैल्यू हो गया 50। अगर इसी में सारे डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएंगे तो उसका वैल्यू भी 50 ही होगा। Friends, in the beginning of 20th century, many of the researchers worked with the dominance theory and many proved also. But later on, the same set of scientists who worked on the different क्रॉस-पॉलिनेटेड क्रॉप्स, तो उनके मन में क्वेश्चंस आने लगे और उनको लगने लगा कि डोमिनेंस थ्योरी में कोई डिफेक्ट्स है। तो
उनका assumptions या उनके conclusion क्या थे in order to say that dominance theory cannot be universally accepted. The first one is failure to isolate an inbred with all the dominant alleles as vigorous as their F1. तो देखिए यहाँ पे अगर डोमिनेंस थ्योरी राइट है तो हमें F1 या कोई भी हम हाइब्रिड जनरेट कर रहे हैं तो सब डोमिनेंट आना चाहिए, तो ऐसे तो आता है। ओके तो एक क्वेश्चन है, व्हाई व्हेन देयर इज़ नो इनब्रेड इक्वल टू द परफॉर्मेंस ऑफ हाइब्रिड। तो डोमिनेंस हाइपोथेसिस ही ट्रू है तो हमें इनब्रेड मतलब क्या है, इनब्रेड इज डेवलप्ड बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग और सिबिंग और एक होमोजाइगस एंड होमोजीनियस लाइन को हम डेवलप करते हैं, ठीक है। तो उस लाइन को पाने के लिए विद द कैरेक्टर ऑफ दिस, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट नेचर के साथ हम क्यों नहीं एक इनब्रेड को पा रहे हैं, मीन्स द इनब्रेड विच इज़ हैविंग इक्वल परफॉर्मेंस टू हाइब्रिड हमारे साथ क्यों नहीं है, दैट इज़ एन एक्सेप्शन टू डोमिनेंस थ्योरी। तो दूसरा क्वेश्चन ये उठता है और इसी को एक्सप्लेन किया था जोन्स ने कि डोमिनेंस ऑफ लिंक्ड जीन हाइपोथेसिस के साथ, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ जीन्स देयर इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। और इसमें क्या होता है, डोमिनेंट जो इफ़ेक्ट होता है तो डिलीटीरियस रिसेसिव अलील्स इसमें हिडन होते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन बढ़ने लगता है ड्यू टू सेग्रीगेशन, ठीक है। तो सेकेंड है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील्स इन F1। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, सारे जब हम जितने भी इनब्रेड्स होमोजाइगस नहीं हो सकते हैं, मतलब हम जब बहुत सारे इनब्रेड्स बनाने की कोशिश करते हैं तो एक लाइन लेंगे तो इसमें कई प्लांट्स ऐसे होंगे जिसका सारे का सारा होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक अजम्पशन या प्रेडिक्शन किया गया है कि for 10 loci that would be 4 raised to 10, that means one plant in a million may be homozygote with all dominant loci. तो सेकेंड ऑब्जेक्शन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील्स इन F2। तो जैसे आप जानते हैं कि अलील्स या जनरेशन ओवर जनरेशन सेग्रीगेशन होते रहता है। F2 में सेग्रीगेशन या F2 पॉपुलेशन हाईली सेग्रीगेटेड है, मतलब इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील्स नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर होमोजाइगस वाज दिस डोमिनेंस थ्योरी वाज ट्रू तो क्या होना चाहिए, ये जो डोमिनेंट जीन्स के वजह से हमारा जो कर्व है वो ऐसे एक तरफ मुड़ना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्वांटिटेटिव जीन्स और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हमारा पॉपुलेशन क्या होता है या हमारा जो भी बनाते हैं वो होगा दैट विल फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा ऑब्जेक्शन बन गया है। एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील्स इन F2, इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया था कॉलिन्स इन 1921 में। तो एक्सप्लेनेशन था उसमें हेरिटेबिलिटी 100% नहीं है और एनवायरनमेंट एंड पॉलीजेनिक इफेक्ट भी उसमें होता है। देखते हैं जोन्स का डोमिनेंस ऑफ लिंक्ड जीन हाइपोथेसिस क्या बताता है। Recombination among loci could result in plants homozygous for all favorable alleles, मतलब सेग्रीगेशन होने के लिए क्या चाहिए, रिकॉम्बिनेशन चाहिए। तो रिकॉम्बिनेशन अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो हमें फेवरेबल अलील्स का कॉम्बिनेशन बन के प्लांट्स होमोजाइगस बन सकते हैं, मतलब सारे प्लांट्स नहीं, हम किसी कॉम्बिनेशंस को ऐसे पा सकते हैं जिसमें सारे होमोजाइगस जीन्स प्रेजेंट है। इन रिपल्शन फेज लिंकेज आइदर स्लो और preclude the development of such lines. Empirical evidence support dominance hypothesis as inbred lines are improving in performance. In 1970s, investigators were interested in the relative magnitude of additive variance and dominant variance. तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो in F2 crosses with ratio of dominance variance and additive variance were more than 1, indicating इसका मतलब होता है the large amount of dominance variance, but once the population were random mated for several generations, the ratio of this particular dominance variance by additive variance became less than 1.
This was likely due to recombination among repulsion phases. As you know, linkage leads to, if the thing is in coupling phase, it may lead to upward bias estimates of additivity, and if it is in repulsion phase, that means upward bias of the dominance. Dominance repulsion phase with unidirectional dominance gives overestimation of the heterosis. That's how the linkage affects on heterosis. तो थर्ड है, if complementation is responsible, it should be possible to create inbred lines with only favorable alleles, but breeders still failed. The magnitude of heterosis was not diminished but has increased slightly. Superior inbred lines have been difficult to identify, likely due to the large number of loci differing between two parents, as an idea initially reported by East in 1936. तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन 1 या ऑब्जेक्शन 1 एंड 2 के लिए सम एक्सटेंट तक एक आंसर बन गया. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के लिए आंसर है कि टेट्राप्लॉइड में कैसे होता है, मतलब सेग्रीगेशन पैटर्न. तो टेट्राप्लॉइड में प्रोग्रेसिव हेटेरोसिस रेफर्स टू द फैक्ट दैट डबल क्रॉस हाइब्रिड ऑटोटेट्राप्लॉइड्स typically show greater vigor than the single cross hybrids. Increasingly superior alleles at any one loci must be added to the genotype with each different genome introduced in the tetraploid without contributing inferior alleles at other loci. The probability of this occurring is low. This observation argues against simple complementation as the sole basis of heterosis. Therefore, there must be an additional molecular explanation. Increased allelic diversity creates more robust heterotic response. Quadriplex hybrid, which contain potentially 4 different alleles per locus, exceed even that of the hybrid A, B और C, D. इसका मतलब ये है जब हम कोई भी एक टेट्राप्लॉइड लेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल A, B, C, D, तो इस टाइप का टेट्राप्लॉइड मतलब टेट्राप्लॉइड विथ ऑल द डोमिनेंट अलील्स पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब हम टेट्राप्लॉइड्स का क्रॉसिंग या सेल्फिंग बनाते जाते हैं तो उसका अटेनिंग द वन काइंड ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो होता है एज कंपेयरिंग टू डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड. नेक्स्ट है रैपिड इनब्रीडिंग डिप्रेशन इन टेट्राप्लॉइड्स. If inbreeding depression is driven by homozygosis of recessive alleles, then it should proceed at a much slower pace in tetraploids. At any one heterozygous locus in diploids, selfing will result in 50% of the progeny being homozygous, whereas in tetraploids, selfing for the heterozygous loci will only produce homozygous allele in 1:8 of the progeny. 1:18, सॉरी यहाँ पे दिया गया है, देखिए 1:18 ऑफ द प्रोजेनी. मतलब अगर हम सेल्फिंग करते जाएंगे तो होमोजाइगोसिटी अटेंड करना बहुत ही आसान है, किसमें, इन डिप्लॉइड्स, लेकिन इन टेट्राप्लॉइड्स में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है. द इनब्रीडिंग डिप्रेशन कर्व्स ऑफ टेट्राप्लॉइड्स plants and diploid plants are similar. Fact that be allelic dosage impacts the magnitude of heterosis and may be an additional argument why complementation of recessive detrimental allele is an adequate model for heterosis. The dosage of identical alleles changes more rapidly than homozygous and could potentially contribute to the unexpected more rapid progress in inbreeding depression. तो टेट्राप्लॉइड में क्या होता है, अगर यहाँ पे नल्लीप्लेक्स या डुप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स जो भी है, अगर जब डुप्लेक्स की बात करते हैं तो उस केस में इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं. Far we discussed about the dominance model and exceptions to that particular model. Now some other researchers have extended the concept, like the dominance model or the heterosis may be due to the hemizygous complementation of many such genes with minor quantitative effect in hybrids lead to significantly increased performance of hybrid plants. Maybe other possible causes like transcriptome content, transposable elements, loss of genomic collinearity,
Then other scientists proved that there is unlikely that all species that display heterosis contain degree of non-collinearity in their genome as high as that in maize. Let us move to the overdominance concept. It is the second basis or genetic basis of heterosis. This was first identified, or the concept was first put forth by Fisher in 1903, but it was proposed by Schell in 1908 and later explained by Hull in 1945. Term overdominance was also coined by Hull in 1945. The definition of overdominance says that the heterozygote, that is capital A small a, at one or more loci is superior to either of the two homozygotes, means superior over the two homozygote parents. Here you can see there is a heterozygote which is superior on recessive homozygote as well as dominant homozygote. This model proposes that the allelic interaction at a single heterozygous locus result in a synergistic effect on vigor that surpasses both homozygous parents. No assumptions of dominance or recessive relationship here. Both alleles function together. Single or small segment of genomes are responsible for heterosis, and East in 1936 postulated that divergence of alleles brought together in heterozygote tend to increase the vigor of heterozygotes. In this picture you can see P1 is one parent which is having different allelic combination. That means both alleles are in homozygous form but for two different characters, and in P2 you can see the homozygous condition and for two different characters. When we bring them in F1 there is a different kind of combination, means because of the recombination the F1 hybrid is superior to both of its parent because of the synergistic effect or the process of complementation. As this figure indicates, A1, A4 means the divergent alleles, most divergent alleles can give better vigor as compared to the less divergent one, as A1, A4 is greater or having better expression of heterosis than A1, A3, A1, A2, and the least expression is observed in A1, A1 because of its homozygosity and not a better combination of heterosis. That means we cannot go beyond a certain amount of diversity because over exploitation of divergence may lead to the concept of cross incompatibility. Now we shall see the similarities and differences between dominance and overdominance hypothesis. When we consider the inbreeding, both in dominance and overdominance concept, reduced vigor and fertility is the result of inbreeding, or in scientific term we may call it as inbreeding depression. Outcrossing process may lead to retention of heterosis or increasing the heterosis. Then the third process is degree of heterosis increased with the genetic divergence between parents. Coming to the differences, in case of dominance, inbreeding depression is the result of homozygosity for deleterious recessive alleles. As I told, in dominance hypothesis, the dominance genes are given importance. That means because of the presence or expression of the dominance genes, their recessive genes are hidden, means their expression is suppressed. But over a period of time, these recessive alleles restore or they store the deleterious effect. Because of that, there will be difficulties in the later generations. Overdominance process says that inbreeding depression is the result of homozygosity itself. Dominance hypothesis says that heterosis is the result of masking of the harmful effect of recessive alleles by their dominant alleles, but overdominance says that the heterosis is the result of heterozygosity itself. In dominance, the phenomena of heterozygote is comparable to that of the dominant homozygote, but in overdominance, the phenomena of heterozygote is superior to both the homozygotes. In dominance hypothesis, inbreds as vigorous as their F1 hybrids can be isolated, but in overdominance, the inbreds as vigorous as F1 cannot be isolated. Let us see the examples for overdominance hypothesis. There are many potential examples. Like in all the crops, overdominance cannot be proved, but neurospora, maize, bajra and some other
species, or we can say crops, which gave sufficient evidences for overdominance. Let us talk about the Neurospora overdominance hypothesis. When two normal strains were taken, they were not giving better growth. That means when there was different level of P amino benzoic acid, that is now commonly called as PAB gene, when that level of expression was different, those parents were not showing better growth. But when these combined together, or when they were crossed, the F1 was having better growth pattern as compared to their parents. The second example is Gustafson's mutant work. As you know, Gustafson is known for his mutation breeding principle. He was called as father of mutation breeding. He worked during 1950s and reported 2 mutants in barley which showed higher rate of photosynthesis than their parents. Next example is sickle cell anemia. As you know, in homozygote recessive state it causes sickle cell anemia, but if it is in the heterozygous state, in many of the African countries it is reported to be resistant to malaria disease. Other examples like SFT genes, erecta mutants, ring genes. One more concept is pseudo-overdominance, which is a bridge, or which is a confusion between dominance and overdominance. Pseudo-overdominance is the result of repulsion phase linkage, then recombination desert formation, as well as epistatic gene action. Pseudo-overdominance में क्या हो जाता है? Because of the repulsion phase linkage, unfavorable allele of a locus would be retained even in the face of strong and persistent selection by breeders for enhanced performance. Such slightly deleterious alleles will be maintained especially in genomic regions with low recombination rates. Example, regions surrounding the centromeres, often termed as recombination deserts. This situation would give rise to pseudo-overdominance heterosis, और उसको बोलते हैं HQTLs. Epistatic gene action can also lead to heterosis in a manner that resembles overdominance. यहाँ पे इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, 2 parents है which are in coupling phase, okay, and they are not showing much better performance, means their performance is normal. But because of the repulsion phase linkage, as you know, linkage is a villain in case of selection. Linkage may be broken by continuous recombination, लेकिन जब भी हम मैप बनाने जाते हैं, that means linkage map और QTL map, और for better selection, linkage हमेशा विलन की तरह काम करता है. और जब हेट्रोसिस कॉन्सेप्ट में लिंकेज आ गया, वो भी रिपल्शन फेज में, so that starts mimicking the process of overdominance, and ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन इट में ब्रेक इवन. सो हम ये हेरिटेबिलिटी इसका हम 100% नहीं मान सकते हैं. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिपोर्ट किया था, लाइक जोन्स इन 1917 फर्स्ट पॉइंटेड आउट दैट लिंकेज कुड कॉज considerable problem when attempting to identify overdominance, which gives rise to pseudo-overdominance. In that case, pair of linked loci would mimic a single overdominant locus, thus skewing a measure of true overdominance when combined in the hybrid. Pseudo-overdominance can dissipate in the selfing progeny, which was observed by Semel, then can also arise from numerous alleles in recombination suppression regions where good and bad alleles combinations are in repulsion. इसका मतलब है ओवरडोमिनेंस तो कॉज करेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे डिलीटीरियस अलेल्स भी लिंक हो सकते हैं. हियर एक एग्जाम्पल कोट किया है, इन मेज डोमिनेंस सीम टू बी द प्राइमरी कॉज ऑफ हेटेरोसिस एंड रिपोर्टेड that overdominance could result from epistasis और repulsion phase linkage. और राइस में भी एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि शैन्यू 63 जिसमें partial full and overdominance gene effects and digenic epistasis, particularly dominance epistasis, were involved in heterosis. In contrast, analysis of sister line maize inbred revealed that heterozygote could be produced without non-additive gene effect and in the absence of substantial genome-wide heterozygote. The parental inbreds of these sister line hybrids were derived from the same cross and were 47 to 77% identical by descent.
The third genetic basis of heterosis is Epistasis Hypothesis. Epistasis means the non-allelic interaction or genic interaction. Here, the heterosis is mostly attributable to favorable epistatic interaction between non-allelic genes, which was stated by Powell in 1944 and Williams in 1959. एपिस्टेसिस क्या होता है? दिस इज़ नथिंग बट जीनिक इंटरैक्शन. तो इसमें डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस इंटरैक्शन हो सकता है, या एडिटिव इंटू डोमिनेंस हो सकता है, या एडिटिव इंटू एडिटिव हो जाता है. The genetic background and allelic interaction therein can have an effect on the heterotic contributions of individual loci. Nuisance for the plant breeder regarding genetic basis debate recently demonstrated in tomato introgression lines that heterosis is manifested even in the absence of heterosis. मतलब बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये बताया है कि जब भी हम ब्रीडिंग करते हैं तो एपिस्टेसिस एक न्यूसेंस है, मतलब इसके वजह से हम एग्जैक्ट जीनिक इफेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. नाउ द टाइप्स ऑफ हाइब्रिड एक्सप्रेशन पैटर्न. हाइब्रिड का एक्सप्रेशन कैन बी क्लासिफाइड एज एडिटिव और नॉन एडिटिव रिलेटिव टू एक्सप्रेशन पैटर्न्स ऑब्जर्व्ड इन द इनब्रेड पेरेंट्स. मतलब F1 का एक्सप्रेशन उसके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मतलब उसके हिसाब से हम कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं. एडिटिव एक्सप्रेशन पैटर्न अकर व्हेन इन हाइब्रिड एक्सप्रेशन लेवल इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ टू पेरेंट्स, मतलब सिस एक्टिंग फैक्टर होता है. देन नॉन एडिटिव एक्सप्रेशन अकर्स व्हेन द हाइब्रिड एक्सप्रेशन लेवल डिविएट्स फ्रॉम द मिड पेरेंटल वैल्यू एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स. तो यहाँ पे दिया है मिड पेरेंटल वैल्यू, पेरेंट 1, पेरेंट 2, बिलो लो पेरेंट. ठीक है, ये पेरेंट 1 यहाँ पे लो पेरेंट है. ठीक है, तो बेटर पेरेंट कौन सा हो गया? पेरेंट 2 इज़ द बेटर पेरेंट एंड पेरेंट 1 इज़ द इन्फीरियर पेरेंट. तो हमारा यहाँ पे एक आया है जिसको मैं इंडिकेट कर रही हूँ, तो बिलो लो पेरेंट मतलब यहाँ पे नेगेटिव हेटेरोसिस है. जब नेगेटिव हेटेरोसिस है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लांट हाइट और इन टर्म्स ऑफ द और भी कोई कैरेक्टर, जैसे कि हम फ्लावरिंग ड्यूरेशन लो कर सकते हैं. तो वो सब बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स हैं. तो हमें जब इन्फीरियर परफॉर्मेंस मिले लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो अच्छी बात है. देन लाइक लो पेरेंट, ये एग्जैक्टली लो पेरेंट के परफॉर्मेंस से मैच करता है. देन मिड पेरेंट मतलब इन दोनों के बीच का इफेक्ट है, यहाँ तक आएगा. फिर हाई पेरेंट लाइक मतलब बेटर पेरेंट के तरह, एंड एबो हाई पेरेंट लाइक मतलब ये होगा हमारा ओवर डोमिनेंस का एक्सप्रेशन. एंड अगर हमारा हाई पेरेंट लाइक मतलब डोमिनेंट पेरेंट की तरह आएगा तो उसको हम डोमिनेंस बोलेंगे. और मिड पेरेंट मतलब एवरेज हेटेरोसिस होगा, मतलब पार्शियल डोमिनेंस जिसमें एक्सप्रेस कर सकता है. देन लाइक लो पेरेंट, और ये दोनों क्या होता है, ये नेगेटिव हेटेरोसिस का एक्सप्लेनेशन देगा. जैसे हमने अब तक डिस्कस किया, हेटेरोसिस के लिए कॉसेस जेनेटिक्स टर्म में बात करेंगे तो डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, एपिस्टेसिस है. लेकिन किसी और केसेस में क्या होते हैं, दीज आर अनेबल टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स. देयरफॉर जीनोम वाइड मैकेनिज्म से भी हम हेटेरोसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो वो है जीन डोसेज बैलेंस, एपिजेनेटिक मैकेनिज्म्स इंक्लूडिंग डीएनए मिथाइलेशन और इंक्रीज्ड एनर्जी एफिशिएंसी हाइपोथेसिस. इन सारे चीज़ों को मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेटेरोसिस टॉपिक में डिस्कस किया है. Molecular basis is explained at two models which are used to explain the heterosis. One model which consider that in hybrids having two different kinds of allele, an allelic expression in additive manner occurs. And the second model that states that the combination of different alleles cause gene expression changes in hybrid that deviate, which is related to the mid parent. This concept of dividing the model with the help of molecular level is given by Birchler and co-workers in the year 2003. There are different mechanisms to support the molecular basis, like the first mechanism is intermediate amount of a single gene product. This is explained in case of neurospora with PAP genes
PAB is responsible for the production, or PAB means p-aminobenzoic acid. When mutant form of PAB is there, it gives no effect, means there is a reduced effect, and when wild type is there, it is also having some different effect. But when the mutant and wild forms are brought together, that gives faster growth rate in case of Neurospora. Second mechanism is separate gene product. Two alleles of a gene produce different gene products. The heterozygotes are more adapted to changes to environments than the two homozygotes. For separate gene products, the example or best example is sickle cell anemia, which is caused in homozygous recessive state. That means homozygote recessive will die. But the heterozygote condition in many of the African countries, it is resistant to malaria. The third mechanism is combined gene product. Many proteins are homodimers or homopolymers. The hybrids are made up of two or more polypeptide protein molecules with different properties. The combination may form a new gene product. Example, two alleles of a gene produce octanyl dehydrogenase 1 enzyme responsible for heat sensitivity in homozygous form. But in heterozygous form, it is less sensitive. Heterodimers have less sensitivity in case of maize. Fourth one is effect in two different tissues. ADH is involved in production of superior biochemical product due to balanced rate of transcription due to the presence of alternate forms of two tissues. Example is ADF has high activity in seedling tissue and ADH is having high activity in pollen. Here you can see the seedling and pollen are two different tissues. When ADHF and ADHS are brought together, that gives higher growth and vigor during the development. The fifth mechanism is expression in greater amount. Heterotic hybrids show 30 to 60% better gene combinations due to reduced methylation pattern than compatible mRNA level, better post-regulatory expression if it is overdominant, then housekeeping genes in case of dominance condition, and better activity of indels. Indels means insertions and deletions. In case of maize, number of genes expressed in hybrids are usually 30 to 60% higher than those of their parents, and heterotic hybrids express as a much higher number of genes than do non-heterotic hybrids. This enhanced gene expression may be due to transcription factors encoded by QTLs showing overdominance. So, in the molecular pattern, the expression of genes in different amounts is mainly the thing, and here it is affected by methylation pattern or mRNA level, better regulatory expression, housekeeping genes, and better activity of indels. That means the molecular mechanism is supported by the biochemical factors. So far, whatever the 5 mechanisms I have discussed, those are related to the biochemical factors, but in relation to that, when the expression comes, there are different things. Here we will discuss one by one. The levels of expression of the gene. Comprehensive analysis of gene expression reveals that most of the genes that are expressed at different levels in the parents show intermediate level of expression in hybrid, suggesting the additive action. In the previous slides, I was discussing about the intermediate level of expression of the certain substances, and that is reported as additive action, but in some other cases that is non-additive also, that is dominant and overdominant genes in hybrids, suggesting transacting factors like transcription factors play an important role in heterosis. The proportion of genes exhibiting non-additive expression is mostly small, but in some studies it is relatively higher. This variation depends on species, parental genotypes, tissue analysis, and experimental design used. Hybrids show non-additive expression patterns for proteins as well, and the proportions of such proteins and the type of non-additive effects observed vary substantially among different studies. First one is additive expression.
Additive gene was prevalent in some studies like maize. Non-additive expression was different in reciprocal triploid hybrids but same in reciprocal diploids. It may be indication that dosage of different genomes alter the nature of non-additive expression, suggesting the role of regulatory effect. QTL mapping is one approach which gives a definite pattern of expression of particular genes. That means when we do the QTL mapping, we can find out the particular position of a gene and as well as its expression pattern. When transcript level is measured in a mapping population and treated as a quantitative trait like any other trait of QTL analysis, then it is described as eQTL. The expression QTL controls the expression level of transcripts. Remember, the expression QTL controls the expression level of transcripts. When QTL affecting gene transcription maps close to the affected gene, it can be classified as cis-acting, and when QTL that maps further away on the same chromosome or to another chromosome, that is classified as trans-acting. Means the cis-acting and trans-acting nature of particular QTLs decide the expression or the pattern of expression. नेक्स्ट वन इज़ एपिजेनेटिक वेरिएशन. एपिजेनेटिक वेरिएशन के बारे में बताऊं तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है एपिजेनेटिक्स के ऊपर, तो आप वो देख सकते हैं. लेकिन अगर मोटे मोटे तरीके में एपिजेनेटिक्स के बारे में बताना है तो ये क्या होता है, दिस इज़ ए चेंज एट सरफेस लेवल विदाउट एनी अल्ट्रेशन इन द डीएनए लेवल. मतलब एक्सप्रेशन में चेंज होता है लेकिन डीएनए या बेसिक लेवल में कोई चेंजेस नहीं होते हैं. एग्जाम्पल क्या है, डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन डिफरेंसेस इन अराबिडोप्सिस, मेज, राइस जीनोटाइप्स that can exhibit stable inheritance. There is also evidence for natural variation in small RNA abundance among individuals of the same species. मेज़ के ऊपर स्टडी और अदर क्रॉप्स के ऊपर स्टडी ये बताता है कि जीनोमिक डीएनएस ऑफ इनब्रेड्स आर मोर मिथाइलेटेड देन दोस ऑफ हाइब्रिड्स एंड दैट डीएनएस ऑफ हेटेरोटिक हाइब्रिड्स आर लेस मिथाइलेटेड देन दोस ऑफ लेस हेटेरोटिक एंड नॉन हेटेरोटिक हाइब्रिड्स. ये मैंने बताया है. इन एडिशन डिफरेंट जीनोमिक रीजन्स में बी हाइपर मिथाइलेटेड इन डिफरेंट इनब्रेड्स. It is believed that the plants that level of DNA methylation is negatively associated with gene expression. मतलब ये पैरेलल में नहीं चलता है, ऑपोजिट टर्म्स में चलता है. कौन सा डीएनए मिथाइलेशन एंड जीन एक्सप्रेशन. मतलब डीएनए मिथाइलेशन का रेट ज़्यादा है तो जीन एक्सप्रेशन कम हो जाएगा, और जीन एक्सप्रेशन ज़्यादा है तो मिथाइलेशन पैटर्न कम हो जाएगा, और इसी को हम हाइब्रिड्स में देख सकते हैं. Therefore, reduced level of DNA methylation in hybrids may lead to increased gene expression and consequently heterosis. Epigenetics is another field which leads to heterosis, or it's another cause for heterosis. As you know, epigenetics refers to heritable through mitosis or meiosis alteration in gene expression that are independent of DNA sequence. Different epigenetically regulated forms of a gene are known as epialleles. So, the types of epigenetic expression on heterosis are DNA methylation, histone modification, and RNA interference. Histone modification leads to chromatin remodeling, that means changes at a histone level, and RNA interference means with the help of siRNA, miRNA and shRNA alteration at the level of gene expression. Epigenetic information system could generate epigenetic variation or epialleles that had never been considered as the cause of phenotypic variation. Local chromatin status mediated through epigenetic modification can potentially affect gene expression in cis or trans regulatory model. Next is RNA interference. RNA interference is a conserved mechanism for regulating gene expression. This is the major process which occurs through double-stranded RNA. Here, three things comes in RNA interference. One is miRNA, then siRNA, followed by shRNA. All these are having their own activities which are negative regulators of the target transcripts accumulation.
mediate post-transcriptional gene silencing, RNA-directed DNA methylation, and chromatin remodeling are the basic activities of these RNA interference mechanisms. Here one thing you should note down, miRNA and siRNA are differentially expressed between hybrids and its parental inbred lines. If siRNA and miRNAs do not match genes from one inbred to the other inbred, the resulting hybrid could exhibit novel pattern of gene expression. Long non-protein coding RNAs, that is NCP RNAs, are identified as precursors of mi and siRNA. That means their presence in different amount or their expression in different rate gives better expression pattern in case of some of the hybrids or better heterotic expression. Here in this picture you may see the potentiality of heterosis. As in parent A, the transcription factor is inactive. It is unable to carry out the transcription process because of some things like it is unable to bind the promoter region. The same condition is observed in parent B, but when in F1 hybrid is produced, you may see that transcription factor is able to bind to promoter region, and finally there is a transcription process. This is how the DNA methylation process works on the process of heterosis. Conversion of cytosine to 5-methyl cytosine could generate epigenetic variation, epiallele, and creation of hybrid vigor. DNA methylation does not change the DNA sequence and its function, but does change its expression level, referred as epigenetic change. Association with gene silencing and genes with abundant 5-methyl cytosine in the promoter region are usually transcriptionally silent, function to suppress as regulatory factors. This is the reports of different scientists as given. I have compiled and given here. Altered regulatory interactions could play a role in the increased vigor. Basically, heterosis is the result of different allele being present at loci that contribute to the regulatory hierarchies that control quantitative traits. The different alleles can arise from different methylation of DNA. To explain you in a better way, if we take two inbreds, the DNA methylation pattern is fast, but when the heterosis is concerned, when hybrids are produced, the methylation pattern is relatively so slow, because of which the activity of hybrids are considerably good. Therefore, it can be suggested that inbreeding depression partly or primarily result from the lower level or fewer genes expressed simply due to homozygosity of methylated DNA in regulatory factors, while heterosis is from higher level or larger number of genes expressed simply due to heterozygous condition between methylated and non-methylated DNA in the F1 hybrids. Next process is enhanced cellular energy in hybrids. Heterosis may be the result of greater cellular energy efficiency of hybrids due to selective protein synthesis and metabolism. About 1 to 5% of the genes of different species have alleles that encode unstable or inefficient proteins. It has been postulated that the quality control mechanisms in the hybrid detects the allele encoding unstable or inefficient proteins and suppresses their expression. This selective suppression of gene expression would lead to an overall saving of energy that would have otherwise been spent on the synthesis and degradation of these unstable or inefficient proteins. This energy saving would become substantial when it is summed up over all the loci. As a result, there would be more rapid cell division in the hybrids, leading to the growth advantage and ultimately improved performance. तो यहाँ पे इस स्लाइड में यही बताया गया कि जब हम हाइब्रिड बनाते हैं वहाँ पे सेलुलर एनर्जी भी जनरेट बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है बिकॉज ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब एक प्रोटीन्स के बीच में फेवरेबल इंटरेक्शन बन जाता है. उसके साथ में हाइब्रिड्स में क्या होता है, रैपिड सेल डिवीज़न हो जाता है. तो वो
बेटर परफॉर्मेंस और फास्टर ग्रोथ होने में डेवलप करता है, और उसी के साथ में रिप्रोडक्टिव स्टेज भी जल्दी जल्दी आ जाएगा, सो दैट along with the greater amount or quantity of the outcome we may get the faster growth rate also. मीन्स यहाँ पे हाइब्रिड्स हैं हमेशा पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी फैक्टर्स मूव करते रहते हैं. जैसे कि हमने अर्ली ड्यूरेशन सोचा, दैट्स अ नेगेटिव फैक्टर बट पॉजिटिव फॉर आर बेनिफिट. और अगर यील्ड की बात करेंगे तो वो ऑलरेडी हाइब्रिड विगर के टर्म्स में बात करते हैं. Coming to the increased ploidy level. Aneuploidy reduces vigor while polyploidy are more vigorous than diploids. This you know when the polyploidy condition is exposed, or when we increase the set of chromosomes in a genome, what will happen means when the ploidy level is increased, in terms what I want to say, that means there will be increased heterosis which is observed in some cases. That indicates that organisms have mechanisms to sense gene dosage balance. The dosage sensing is likely to be a genome-wide mechanism that is independent of specific alleles or loci, and this mechanism could contribute to heterosis. There are certain evidences for existence of variation in the different ploidy level. Some genes may be present in one line, but they may be absent from another line. Some genomic regions may be present in more than one copy in the genome of one line, while the genome of another line may have additional copies of some other genomic regions. That means heteroploids, which are having the different or high vigorous as comparing to the other ploidy conditions. In case of two inbred lines differ for the genomic regions showing presence or absence and showing copy number variation, their hybrid would have average copy number of all the genes involving in these variations. In comparison, the parental inbred lines would show the two extremes of copy numbers possible for them. Genome dosage balance in hybrids. One inbred line has 3 copies per genome of one genomic region, and the other inbred line has 4 copies per genome of another genomic region. This is just an example. These inbred lines will have 6 and 8 copies in one inbred of the concerned genomic regions, while their hybrids will have only 4 and 5 copies respectively of these two regions. So that what will happen? The hybrid would show greater gene dosage balance for the two genomic regions and would be more vigorous than the two parental inbred lines. The gene dosage effects over the entire genome will add up to generate heterosis. The findings of the study involving diploid and triploid inbred lines of maize indicate that the main parts of heterosis results from dosage sensitive mechanism. There is evidence that the mechanism of heterosis is significantly affected by dosage of that is observed in cotton genomes. Coming to the molecular markers' role in explaining the genetic basis of heterosis. In some studies, it is reported that the importance of overdominance through marker studies, especially in case of maize, the hybrid vigor is the evidence which is proved from overdominance hypothesis. Others have found dominance to be predominant, while some other observed to be extensive epistasis. Example, molecular markers linked to QTLs were used to analyze the expression of heterosis in elite rice hybrids, that is Zenshan 97 and Mingai 63. This you need to remember these two varietal name. One is Zenshan 97 and one is Mingyu 63. The QTLs showed overdominance, but the overall heterozygosity was not relevant for heterosis. Digenic epistasis was common, and even such pairs of loci that did not exhibit overdominance generally showed epistatic interaction. Thus, in rice, main contributor to heterosis were overdominance at individual loci and epistasis, while overall heterozygosity was not that important. This is proved by making the double hybrids also.
The F1 hybrid performance was not always positively associated with heterozygosity, but it was explained by additive dominant, including partial complete overdominance and epistasis, that is additive dominant and dominant kind of gene interactions. That means heterosis cannot be simply or singly explained with the help of dominance theory. It's a combination of dominance, overdominance, even the epistasis in different crops. Coming to the importance of genetic distance in heterosis, genetic distance in short form is called as GD, that may be used to classify the lines or populations into distinct heterotic groups. Heterotic groups का ये मतलब होता है based on their vigor or their characteristics. जैसे कि tall planted है तो उसको एक heterotic group में identify या classify किया, या कोई डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई किया, या उसके ईल्ड के हिसाब से ग्रुपिंग किया. तो ग्रुपिंग कैसे किया जाता है? बेस्ड ऑन देयर डेंडोग्राम पैटर्न. जैसे डेंडोग्राम में ग्रुपिंग आ जाते हैं कि उसका सब क्लस्टर्स कैसे कैरेक्टराइज हो रहे हो, वो कैसे एक एक ग्रुप में आ रहा है, बेस्ड ऑन दैट हेटेरोटिक ग्रुप्स बनाते हैं. जैसे कि मैंने एक यहाँ पे डेंडोग्राम ड्रॉ किया है, तो नीटली नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए जो इतने लाइंस है या इनब्रेड्स है, ये सब एक हेटेरोटिक ग्रुप में आ गया. सिमिलरली अगर मैं दूसरा हेटेरोटिक ग्रुप बनाऊंगी तो ये सब दूसरे हेटेरोटिक ग्रुप में आ जाएगा. Heterotic group comprises such lines or population which when crossed with each other show little or no heterosis. But when lines or populations from different heterotic groups are crossed, there is moderate to high heterosis, which is often termed as heterotic pattern. तो heterotic pattern क्या होता है? The basic aim of making heterotic groups क्या होता है कि based on our needs, एक ग्रुप बनाएंगे तो उसका मतलब ही कुछ और होता है, तो दूसरे ग्रुप से वो कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कैरेक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. तो ऐसे ग्रुप्स बनाने का क्या मतलब है? हमारे कैरेक्टर जिसमें हम इंटरेस्टेड है, उन कैरेक्टर्स को लेके उसको हाइब्रिड में इनकॉर्पोरेट करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है. In case of maize, heterotic groups are well established. Typically, the inbred lines of heterotic groups have high constitution, high characterization. Coming to the overall mechanisms that have been proposed to explain heterosis, मतलब मैं molecular basis of heterosis को summarize कर रही हूँ with the help of different mechanisms. पहला है intermediate amount of biochemical product at optimum level. इसको मैंने एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ पी अमाइनो बेंजोइक एसिड कंटेंट इन न्यूरोस्पोरा क्रसा. तो क्या हुआ था, जब ये कंटेंट कम था तो ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रहा था, तो एक इंटरमीडिएट अमाउंट, मतलब ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए. जब हाइब्रिड बनाया तो इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ पी अमाइनो बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस हो गया. बिकॉज ऑफ दैट न्यूरोस्पोरा क्रसा हैड फास्टर ग्रोथ रेट. सेकेंड मैकेनिज्म है द प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट अलील्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज और फंक्शंस. मतलब एक इनब्रेड में एक काइंड ऑफ प्रोटीन है और दूसरे में दूसरा है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ उन दोनों प्रोटीन्स के प्रेजेंस के हिसाब से बहुत ही अच्छा फंक्शन हो सकता है. एग्जाम्पल सिकल सेल हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन. तो होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो सिकल सेल अनीमिया कॉज करेगा. अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा तो मलेरिया रेजिस्टेंस कॉज करेगा. ठीक है. थर्ड एग्जाम्पल है जनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्रोडक्ट. एग्जाम्पल मैंने कोट किया था, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट करता है. जब हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा, वो प्रमोटर से बाइंड कर जाएगा एंड इट विल एनेबल द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, तो आप जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन से डेफिनेटली आरएनए बनता है, तो प्रोटीन प्रोडक्शन आसानी से बन पाता है, तो मेटाबॉलिक रेगुलेशन पाथवे एक्टिवेट हो जाता है. फोर्थ मैकेनिज्म है इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन टू डिफरेंट टिश्यूज़. टू डिफरेंट टिश्यूज़ को एक्सप्लेन किया था ADHS एंड ADHF. जो मेज डिफरेंट टिश्यूज़ में हुआ था, तो वो दोनों के एक्सप्रेशन से बेटर कैरेक्टर्स पाए गए थे. फिर नेक्स्ट है एनहांस्ड एक्सप्रेशन लेवल्स ऑफ सम जीन्स. तो ये रिलेट होता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन से या हिस्टोन रेगुलेशन से और आरएनए इंटरफेरेंस के एक्टिविटी से. फिर एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ जीन्स,
ये भी रिलेटेड है स्टोन मॉडिफिकेशन और एपिजेनेटिक चेंजेस से। देन सुपीरियर जीन डोसेज बैलेंस, जैसे कि नंबर ऑफ जीन का डोसेज बढ़ेगा वैसे एक्सप्रेशन पैटर्न भी बहुत ही कंट्रोल में आ जाएगा। देन इंक्रीज्ड एनर्जी एफिशिएंसी हाइब्रिड्स में ड्यू टू बेटर मेटाबॉलिक बैलेंस, एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है। देन इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी इन द मेटाबॉलिक नेटवर्क्स, मतलब मेटाबोलाइट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो एक बैलेंस्ड वे में चलने लगता है। तो ये सब जो भी मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन किया है उसको सब समराइज़ करने के लिए ये टेबल दिया गया है। दिस इज़ मॉलिक्यूलर चेंजेस एट एपिजेनेटिक, जीनोमिक, प्रोटियोमिक एंड मेटाबॉलिक लेवल विच लीड टू हेटेरोसिस ट्रेट्स। तो मॉलिक्यूलर चेंजेस किस किस में आता है, स्मॉल आरएनएस में मिथाइलेशन एंड क्रोमैटिन मॉड्यूल रेगुलेशन से। तो ये ओमिक स्टडीज़ है, तो इसमें और भी आता है ट्रांसक्रिप्टोन, सिस एंड ट्रांस रेगुलेशन, फिर प्रोटियोमिक्स एंड मेटाबॉलिक्स आता है। फिर ये नेटवर्क किसके ऊपर काम करता है, एपिजेनेटिक जीन एक्सप्रेशन एंड नेटवर्क चेंजेस के ऊपर। तो ट्रेट एक्सप्रेशन में ये दिखाता है शुगर, स्टार्च एंड मेटाबोलाइट्स एंड बायोमास एंड यील्ड। तो इनके बेटर कंपैटिबिलिटी से हेटेरोसिस इन द डिज़ायरेबल ट्रेट्स हो सकता है। As you know, biochemical basis of heterosis means how the molecular structures and the basic biochemicals which are responsible for the process of heterosis. The first concept in this particular aspect is bottleneck concept given by Moengels-Dwarf. According to him, the excellence of genotype depends not upon its strongest link but upon its weakest link. Emphasis is laid not on the superiority of hybrid but on the inferiority of its parents. Inferiority of the parents are thought to be the bottlenecks represented by inefficient alleles. It supports the dominance hypothesis. That means the bottleneck concept of Moengels-Dwarf states that the weakness of the parents. It doesn't mean that if parents are weak, we cannot take them in making the hybrids. Because of the better complementarity, they may also give the better hybrid or heterotic vigor, either in positive heterosis way or negative heterosis way, and the bottleneck concept of Moengels-Dwarf supports the dominance hypothesis. Second is evidence by Robbins. What Robbins did, he took the basal medium of tomato varieties, then F1 hybrid was produced by the combination of red currant and Johansen Ferrer. By this, roots of red currant had bottleneck for pyridoxine production, whereas roots of Johansen Ferrer had bottleneck for supply of the nicotinamide. But when the hybrids are produced, that was able to produce both the vitamins, that is pyridoxine and nicotinamide. That means somewhere the combination is giving better results. Coming to the modes of gene to gene product interaction. Supplementary action model, where the allele having or the parent having combination of A0 is considered as X parent. Then suppose A1 is considered as Y parent. If A1 A0, that means in heterozygous condition what will happen, alleles produce entirely new product, heterozygote produce both the products. Example, rust resistance in flax. Based on the better combination of the alleles, rust resistance was obtained in case of flax, that is Melamsera linni. Coming to the models of gene to gene product interaction, the second pathway is alternative pathway. Here A0 X is E1 and A1 is E2. Then A1 A0 is considered as E1 and E2 combination. Heterozygote can produce both depending on the environment, like temperature sensitive alleles of plants. Here specific temperature is given. R1 or E1 has maximum expression of red pigment at 80 degree Fahrenheit. Then R2 is considered as E2 here, means parent 2, which has maximum expression of red pigment at 50 degrees Fahrenheit.
When R1 R2 means hybrid is produced, it gives red pigment at low to high temperature. That means the range of temperature varied considerably in case of hybrids. That means better adaptability was obtained. Then optimal amount. Consider A0 is one parent, that is A1, which is having 0.1. Okay, then A1 is having 2x, means this is the quantity. When A1 or hybrid is produced, it came to 1x. That means heterozygote produce the optimal amount. With example, it is given in Drosophila. For example, for lethal alleles, when no active genes, that means when A0 is present, you consider it as non-active gene, then what will happen? Lethal effect or low expression is found. Then when one active gene is there, this is one active gene and this is inactive, तो क्या हो जाएगा? We will get the optimum amount of expression. And the third kind is A1, that is two alleles active, means that is a wild type. Then hybrid substances. Heterozygote produce entirely new product. For example, even esterase enzyme in maize molecule composed of polypeptide specific by two different alleles A1, A0 that may be more active than the homomultimers specified by same allele A0, A0 or A1, A1. That means when hybrids are made, entirely different component is produced. So friends, to summarize this biochemical basis of heterosis, there are four concepts. One is supplementary. In supplementary concept, I have given an example of rust resistant genes, that is in Melamserallini, where the resistant genes, when they are present in different parents, they are not giving good results, but when they are bringing together, they will give better resistant capacity. In the second process, alternative pathway, for this the best example is temperature sensitivity and temperature tolerance capacity. Here, when 50 degrees Celsius temperature or one strain or one kind of parent is resistant or tolerant to 50 degrees Fahrenheit and another is at 80 degree Fahrenheit. But when a hybrid is made in between two, that is tolerable to a range of temperature, and that is the alternative pathway. Third one is optimum amount. This is given with an example of the Drosophila lethal gene action. When the allele is present in less dose, that means one kind of parent is having lethal effect and another is having higher effect, that is wild kind. And when the combination is made or the hybrid is produced, due to the heterotic effect, it is tolerant to the lethal condition as well as perform with the optimum condition. The fourth one is hybrid substance. This is all dependent on the polypeptide behavior in the hybrid. That means one kind of polypeptide may be responsible, or one kind of vitamin is produced in one particular strain and another in another. So when we bring together, means when we make hybrid, there will be production of both kind of substance, or the polypeptide complementation leads to the better results. There are different mechanisms in order to support the physiological basis of heterosis. The first and foremost is net assimilation rate. If that is increased net assimilation rate, heterosis increases due to increased availability of nitrogen to the roots. As you know, the hybrids are the voracious feeders of nitrogen. They exhaust all the nutrients from the land, or we can say from soil, and by this process they increase the net assimilation rate, due to which the vigor of a plant is increased. The second is leaf area index. Heterosis helps in increasing both sink and source capacity. High leaf area index as comparing to their parents gives better survivability and better productivity as comparing to their parents. The third thing is high root growth. Roots help as a better sink for photosynthesis.
Then hormonal balance. If you can say there is some hormonal good amount in one parent and some hormonal composition in other parent, when by their combination we can make a favorable balance in the hybrids. As I already told in other videos also, whenever you are going for heterosis or going for hybrids, all the hybrids which you have developed cannot give you the best one. The only hybrids which are best as you can obtain are the hybrids which are having better combination and compatibility with each other. If you are developing thousands of hybrids, one or two hybrids which are very favorable, which are giving good performance in multi-location trial and multi-year trials, can be released and grown in the further generations and can be utilized for the commercial exploitation. Hormonal balance. Better balance gives superior performance than their parents. Example, hybrids responds to better endogenous gibberellic acid concentration. Then metabolic reaction. Inbreds have elevated metabolic reaction, whereas their combination or hybrids may give good metabolic reaction. Mitochondrial complementation. Based on the in vitro studies, somatic hybrids and hybrids which have better complementation, as some of the plants may be having little or less effective mitochondria, but some others are having good mitochondria amount. Then by combining these two, we can get the better complementation in the mitochondria. As you know, these are involved in the energy induction in the cells. Next is the causes of heterosis in terms of physiological aspects. First one is greater initial capacity hypothesis or greater initial capital hypothesis. The theory was given by Ashby in 1930. He studied the physiology of inbreds and hybrids of maize and tomato, conducted that hybrid vigor is due to an increased initial embryo size. He termed it as greater initial capital. I just would like to share the Ashby's hypothesis of greater initial capacity. Here, heterozygosity results from the greater initial weight of the embryo, and hybrid vigor is nothing more than the maintenance of initial advantage in hybrid size. Hybrid do not differ from their parents in relative growth rate. Ashby's hypothesis is explained in terms of three things. One is greater initial weight, followed by maintenance of embryo size in the initial stage and relative growth rate. This you need to remember. The second cause is cytoplasmic nuclear interaction. Michelis, Shell, Lewis and others suggested that hybrid vigor is the interaction of cytoplasmic and nuclear systems. Cytoplasm is a transparent fluid rich in RNA and mitochondria, which is usually transmitted through the female parent to the offsprings. Coming to the stages of physiological manifestation of heterosis. The first stage is seed and embryo development. High positive correlation was recorded between hybrid vigor and embryo weight. Copeland noted that hybrid embryo exhibited greater vigor in the earlier stage of development. Ashby found significant differences between embryo weight of reciprocal crosses. Early difference in the embryo size in favor of hybrids resulted from a rapid growth rate of multicellular zygote. That means there would be better compatibility if we go for hybrids, and this will show the initial vigor as well as initial higher embryo development due to the complementation of different physiological aspects. Second one is early seedling growth. Hybrids show higher growth rate than the inbreds immediately after germination, but not later. They do not have a larger maximum growth rate period. Ashby say embryo size is more significant than reserve food material. As you can say, hybrids can complete their life cycle, means in order to say, if we talk about the reproductive stage, they try to complete in a better way as well as in less time. So it's a beneficial aspect related to hybrids.
Third is later seedling growth. Hofer found root dry matter content of hybrids to be intermediate between parents. Hybrids found to absorb and utilize more amount of NPK than the inbred lines. Catalase activity was higher in heterotic hybrids. That means enzymatic activity, biochemical molecular complementation, as well as the better nutrient absorption capacity is found in the hybrids in later seedling growth as well. Coming to the third part of the lecture, that is hybrid production. In terms of heterosis, if we have to explain the hybrids, heterosis is the result of hybridization. Let us see the mechanisms promoting hybridity. The first mechanism is mating system, through which monochiasm and diochiasm. Monochiasm means the reproduction, और अगर हम एक प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मतलब उसका पोलन लेके उसमें ही पॉलिनेट कर रहे हैं तो वो मोनोशिज्म, मतलब मेल एंड फीमेल ऑर्गन व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, दैट इज मोनोइज्म mechanism, and diochiasm means male and female plants are separate. फिर incompatibility है, heterostyle in flower मतलब स्टाइल का लेंथ अलग होता है. Then homothallism, heterothallism in fungus, and male sterility. These are the mating system mechanism which harness heterosis. The second mechanism is chromosomal mechanism, that is explained with the help of Golden and Valence complex and heterotic inversion heterozygotes in Drosophila. गोल्डन एंड वैलेंस कॉम्प्लेक्स एक बैलेंस्ड सिस्टम की तरह होता है. एंड द थर्ड वन इज जेनेटिक मैकेनिज्म्स लाइक ग्रेटर सर्वाइवल वैल्यू ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरडोमिनेंट लोसाई बेस्टोविंग हायर एडाप्टिव वैल्यू टू हेटेरोजाइगोट्स, देन बैलेंस्ड यू हेटेरोसिस. तो F1 हाइब्रिड्स बनाने का क्या क्या चीज़ें होते हैं? मैक्सिमम परफॉर्मेंस अंडर ऑप्टिमल कंडीशन, स्टेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अंडर स्ट्रेस, proprietary control of parents, often reduced time to cultivar development and joint improvement of traits. ये सब F1 का effects होते हैं. तो हाइब्रिड कल्टीवर्स का बेसिक फीचर्स क्या है? दिस आर फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स आफ्टर क्रॉस बिटवीन डिफरेंट इनब्रेड पेरेंट्स. तो इसमें मेजर स्टेप्स क्या होते हैं? डेवलपिंग इनब्रेड लाइन्स, देन फाइंड गुड F1 कंबाइनर्स बिटवीन द इनब्रेड्स, देन प्रोड्यूस गुड F1 सीड इन लार्ज स्केल एंड सप्लाई टू द ग्रोवर्स. तो हाइब्रिड्स का बेसिक नेचर होता है दिस आर यूनिफॉर्म, रिप्रोड्यूसिबल एंड प्रोटेक्टेड इफ पेरेंट्स आर होमोजाइगस. नेक्स्ट है कमर्शियल हाइब्रिड्स. बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिड्स के लिए. तो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड मतलब दो पेरेंट्स को लेंगे और क्रॉस बनाएंगे. ये पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ब्रिंजल, कैरेट, कैस्टर, चिली, कॉटन, कुकुरबिट्स, ऑनियन, सोरगम, मेज एंड राइस में. वैसे ही डबल क्रॉस हाइब्रिड मेनली पॉपुलर है मेज, जिसमें 4 पेरेंट्स का क्रॉस इन्वॉल्व होता है. देन 3-वे क्रॉस विच इज़ पॉपुलर इन मेज एंड सनफ्लावर. 3-वे क्रॉस मतलब एक F1 लेंगे उसके साथ और एक इनब्रेड से क्रॉस करेंगे. देन डबल टॉप क्रॉस. डबल टॉप क्रॉस का मतलब होता है एक F1 इंटू ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी. इसके लिए एग्जाम्पल है मेज. देन ट्रिपल क्रॉस. ट्रिपल क्रॉस का मतलब होता है ये मेनली कैबेज में बनाया जाता है, या बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्रॉस माना जाता है. देन पार्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हेटेरोसिस, जैसे कि सिंथेटिक्स, मेज, ब्रासिका, इन सारी चीज़ों में डेवलप किया गया है. देन कॉम्पोजिट्स, इसको भी मेज एंड रेपसीड में, और सिंथेटिक्स ग्रास स्पीशीज में काफ़ी पॉपुलर है. देन इन पॉलीक्रॉस इन ग्रासेस. कमिंग टू द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स. आर्टिफिशियल टेक्निक से हमें हाइब्रिड्स बनाना है तो हम हैंड इमेस्कुलेशन के लिए जाते हैं. ये बहुत ही फ्रेंडली टेक्निक है, लर्निंग भी हो सकता है, लेकिन जब कमर्शियल प्रोडक्शन करने जाते हैं दिस इज़ नॉट ए फ्रेंडली मेथड. देन डीटैजलिंग करने के लिए मैकेनिकल डीटैजलिंग कर सकते हैं या मशीन बेस्ड डीटैजलिंग कर सकते हैं. तो मशीन बेस्ड बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर वहाँ पे बूट लीफ या जो टेजल का मेन पहला लीफ होता है वो कहीं पे डैमेज हो गया तो अप टू 30% ऑफ द क्रॉप लॉस होने के चांसेस रहते हैं. इसलिए मैकेनिकल डीटैजलिंग काफ़ी पॉपुलर है. ठीक है, नहीं तो इसमें गेमेटिसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं. रिमूवल ऑफ मेल पेरेंट्स, मेल स्टेरिलिटी, जीनिक, साइटोप्लाज्मिक और CGM मेल स्टेरिलिटी,
देन केमिकल सप्रेसर, जैसे मैंने बताया था गेमेटिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, या हॉट वाटर टेक्निक, बहुत सारे और भी कन्वेंशनल टेक्निक्स है जिसके हिसाब से या जिसके हेल्प से हम हाइब्रिड्स को बना सकते हैं। या मेल स्टेरिलिटी, हाइब्रिड बनाने की टेक्निक्स नहीं है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम हटाएंगे एक प्लांट से, जिसके वजह से हम सेल्फिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड्स विथ हाई हेटेरोसिस फॉर यील्ड। तो अगर हम किसी भी हाइब्रिड्स, जैसे मैंने आपको बताया था हर हाइब्रिड गुड हेटेरोटिक कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो अगर हम हाइब्रिड को गुड हेटेरोटिक कॉम्बिनेशन में पाना है तो क्या करना होगा, सिंक्रोनाइजेशन इन फ्लावरिंग होना ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं पेरेनियल स्पीशीज़ हो या कोई भी सीजनल क्रॉप हो जिसमें सिंक्रोनाइजेशन, अगर दो हम वैरायटी लिए हैं या दो काइंड ऑफ इनब्रेड लिए हैं तो क्या होता है, उसका ड्यूरेशन एंटायरली डिफरेंट होता है, स्पेशली जब वो स्पेशियो टेम्पोरल आइसोलेशन से आया होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टेकिंग वन इनब्रेड फ्रॉम सदर्न इंडिया, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम कर्नाटका, एंड वन इनब्रेड आई एम टेकिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, फॉर एग्जाम्पल बनारस, तो अगर मैं इन दोनों को क्रॉस करूँगी तो इसका कैरेक्टर्स एंटायरली डिफरेंट होंगे, क्योंकि द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ बनारस एंड कर्नाटका आर एंटायरली डिफरेंट, तो इसका एडेप्टेबिलिटी भी डिफरेंट होगा। तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके क्रॉप के ड्यूरेशन के हिसाब से हमको सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़रूरी है, आइदर बाय मेंटेनिंग द आइसोलेशन डिस्टेंस, मतलब उसको स्पेशियो टेम्पोरल आइसोलेशन दे के हम ये काम कर सकते हैं, मतलब उसका डेट ऑफ सोविंग चेंज करके या उसमें कोई ग्रोथ प्रमोटर डाल के उसका डेज को सिंक्रोनस कर सकते हैं। देन अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफ़र ऑफ पोलेंस, ये हमेशा एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, जिसमें भी पोलन कम आते हैं तो हेटेरोटिक पैटर्न हमेशा लेस ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है। जैसे कि मेज़ में हमें हमेशा ट्रेमेंडस पोलन मिलते हैं, तो यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड पोलन ट्रांसफ़र बहुत ही फिजिबल है, इवन बाजरा में भी। देन प्रोलॉन्ग्ड रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा एंड पोलन वेरिएबिलिटी, आप जानते हैं राइस जैसे क्रॉप है, राइस, वीट, इन सब में स्टिग्मा रिसेप्टिविटी काफ़ी 1 से 2 दिन के लिए होता है, लेकिन पोलन वायबिलिटी बहुत ही कम होता है। इट मे बी फॉर इवन 5 मिनट्स ऑल्सो, विच इज़ रिपोर्टेड इन सम सब स्पीशीज़। और है 100% मेल स्टेरिलिटी इन CMS लाइन। अगर मेल स्टेरिलिटी 100% एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो प्रॉब्लम क्या आता है कि इसमें सेल्फ सोन सीड्स आ जाते हैं, मतलब कंटेमिनेशन, या B लाइन A लाइन में आ जाएगा तो कंटेमिनेशन हो जाएगा। तो सिंक्रोनाइजेशन फ्लावरिंग के लिए एक बेस्ट टेक्निक है स्टैगर्ड सोविंग, ठीक है, इसको मैं बताना भूल गई थी। देन प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड कॉस्ट इफेक्टिव टू सीड प्रोडक्शन, देन प्रोडक्टिविटी ऑफ हाइब्रिड विच इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल टू फार्मर्स। कमिंग टू द फीचर्स ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, कोई भी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन को हम कैरी करना है तो उसमें गुड हेटेरोसिस होना चाहिए, इजी पॉलिनेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फर्टिलिटी रिस्टोरेशन कैपेसिटी होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ मॉडिफायर जीन्स इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, देन कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल लाइन्स, फ्री अनरिस्ट्रिक्टेड पोलन ट्रांसफर, गुड सीड सेट ऑन फीमेल्स, skilled organized effort for large scale production, सर्टिफिकेशन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन उस क्रॉप में फिजिबल होना चाहिए और उसके लिए सारे फैसिलिटीज़ होना भी ज़रूरत है। इन सारे चीज़ों के अलावा भी कोई फैक्टर्स है, जैसे कि उसका कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए एंड उसको एक गुड कंज्यूमर मार्केट होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप सीड बनाते जा रहे हैं लेकिन मार्केट में उसका कोई वैल्यू ही नहीं है तो कोई बाई ही नहीं करेगा तो लॉस में डूब जाएंगे। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन एक कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वैसे ही एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस भी है। कमिंग टू द प्रॉब्लम्स इन हेटेरोसिस ब्रीडिंग, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है वीक पेरेंट्स एंड हाई इन ब्रीडिंग सेंसिटिविटी। मैं बस पढ़ते जाती हूँ, जहाँ एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन करूँगी। देन हाईली डाइवर्जेंट पेरेंट्स इनएडिक्वेटली अवेलेबल, मतलब अगर आप डाइवर्जेंट पेरेंट्स को ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उनके कंपैटिबिलिटी का भी क्वेश्चन उठता है। जैसे आप राइस में ही ले लीजिए, इंडिका इंटू जपोनिका अगर आप क्रॉस करेंगे तो उसमें बहुत सारे
जोग्राफिकल आइसोलेशन के प्रॉब्लम्स रहते हैं, मतलब जोग्राफिकल डिफरेंसेस रहते हैं, इवन क्रोमोसोमल लेवल में भी बहुत सारे एंड जीनिक लेवल में बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं। इसके वजह से उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, दैट मीन्स इट won't be able to give the perfect cross combination with greater ability to give the better quality. ओके, देन लो GCA एंड लो SCA, जैसे कि जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी एंड स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी हेटेरोसिस ब्रीडिंग में किसी किसी में मिल सकता है, किसी किसी में नहीं भी मिल सकता है। तो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी हम कब कंसिडर करते हैं? व्हेन वी आर गोइंग फॉर सिंथेटिक और कॉम्पोजिट पॉपुलेशन, मीन्स जब पॉपुलेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम जनरल कंबाइनर की बात करते हैं, एंड व्हेन वी गो फॉर सिंगल क्रॉस और डबल क्रॉस हाइब्रिड वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। किसी किसी क्रॉप में, मतलब हर क्रॉप बेस्ट हेटेरोटिक क्रॉप नहीं होता है, मतलब आप हर क्रॉप में हाइब्रिड्स नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप पल्सेस की बात करें या माइनर मिलेट्स की बात करें तो उसमें पॉलेंस बहुत ही डेलिकेट होते हैं, इवन यू कैन नॉट सी दोज फ्लावर्स विथ योर नेकेड आइज, इतने स्मॉल होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट नेचर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पॉलिनेट देम ऑल्सो। फिर CMS यूनिफॉर्मिटी एंड जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, फिर CMS इंस्टेबिलिटी, पुअर फर्टिलिटी रिस्टोरेशन। फर्टिलिटी रिस्टोरेशन इज़ पार्शियल और लैकिंग, मतलब एक परफेक्ट रिस्टोरेशन। रिस्टोरर कब यूज़ करते हैं? हम 3 लाइन यूज़ करते हैं, A, B एंड R, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। 3 लाइन्स होते हैं हमेशा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, मतलब 3 लाइन सिस्टम में A, B एंड R लाइन, ठीक है। A लाइन क्या होता है? ये फीमेल लाइन होता है जिसमें मेल एब्सेंट होता है, और B क्या होता है? ये मेंटेनर लाइन होता है। जब हम A एंड B को क्रॉस करेंगे तो ये मेंटेनेंस करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम R लाइन को A लाइन से क्रॉस करते हैं तो क्या होगा? हमको हाइब्रिड सीड मिलेगा, F1 सीड। दैट मीन्स R लाइन इज हैविंग पोटेंशियल pollen producing capacity, that means it is a desired, most desired parent। तो ऐसे हम मेंटेन करते हैं। तो फर्टिलिटी रिस्टोरेशन पार्शियल और लैकिंग हो जाता है, मतलब इसमें कंटेमिनेशन आ सकता है। देन फ्रेजाइल एनवायरनमेंट्स लिमिटिंग हेटेरोटिक एक्सप्रेशन, एनवायरनमेंट का भी बहुत सारा रोल रहता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेस नंबर ऑफ इनब्रीडिंग टॉलरेंट इनब्रेड्स, मतलब इनब्रेड्स बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बनाने से भी ज़्यादा उसको मेंटेन करना डिफ़िकल्टी है, क्योंकि उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज होने के चांसेस रहते हैं ड्यू टू कंटेमिनेशन और इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। Combination with the high yield per se, high GCA and high SCA are less frequent. Investment on realizing genetic divergence and testing of genetic stocks not adequate. Dearth of R lines, especially match interspecific cytoplasm, then efforts on R line breeding that combines high yield and quality. Addition characters are low, then low frequency of R lines or maintainers in some crops. High variation in extent of cross pollination in CMS or GMS lines. नेक्स्ट फ्लक्चुएशन इन थर्मो और फोटो पीरियड कंडीशन। तो आप 2 लाइन सिस्टम के बारे में जाने, आपको पता होगा 2 लाइन सिस्टम होता है, मतलब इसमें जैसे कि राइस में बेस्ड ऑन द थर्मो और फोटो पीरियड, मतलब TGMS और PGMS मैकेनिज्म यूज़ करके इसमें स्टेरिलिटी को इंड्यूस करते हैं, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे स्टेरिलिटी और फर्टिलिटी डिपेंड होता है। सेम फोटो पीरियड का भी होता है, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन आ जाएगा तो 100% स्टेरिलिटी को हम नहीं पा सकते हैं। नेक्स्ट इज एफर्ट्स ऑन ब्रीडिंग और इम्प्रूविंग कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ पेरेंट्स आर वेरी लो। सिस्टमेटिक पेरेंटल लाइन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर लेस, मतलब इस पे काम करने वाले ब्रीडर्स भी बहुत कम हैं। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स, देन पेरेंट्स आर हाईली इम्प्रूव्ड एंड F1s आर नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ द स्टैंडर्ड हेटेरोसिस। अगर किसी हाइब्रिड को हम रिलीज़ करना है तो उसमें स्टैंडर्ड हेटेरोसिस बहुत ही ज़्यादा रहना चाहिए, अगर कम रहा तो दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। देन वेजिटेटिव फ्लेक्सेशन नॉट फुली एक्सप्लॉयटेड। तो बहुत सारे क्रॉप्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अगर हम राइस में लेंगे तो उसमें डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, हाइब्रिड ब्रेकडाउन,
तो हाइब्रिड विगर डाउन होना, ये सब प्रॉब्लम है। फिर अगर वीट में हम लेंगे तो वीट में हाइब्रिड्स बनाने में क्या प्रॉब्लम है, ये लेबर इंटेंसिव है और इसका मैकेनिज़्म जानना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज इट नीड्स स्किल्ड वर्कर्स। और मोर देन दैट वीट इटसेल्फ इज़ ए हाइब्रिड, क्योंकि जैसे आप जानते हैं वीट का जीनोम एक हेक्साप्लॉइड होता है, प्लॉइडी लेवल इसका हेक्साप्लॉइडी है, मतलब इसमें क्या होता है 42 क्रोमोसोम्स या जी उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो उसके वजह से क्या होता है, इसमें फर्दर हाइब्रिडाइजेशन हम अगर करेंगे तो द आउटकम विल बी रियली लेस। तो पल्सेस एंड मिलेट्स में जैसे आपको बताया था स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बनाना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ द लेस पॉलन वायबिलिटी पीरियड। देन प्रॉब्लम्स इन पेरेनियल क्रॉप्स क्या होता है, पेरेनियल क्रॉप्स में सिंक्रोनाइजेशन लाना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सीड प्रोडक्शन में हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लाइक वेरी फ्यू वर्कर्स आर स्किल्ड लेबर्स रिक्वायरमेंट एट द रेट ऑफ 4 to 6 for 30 days, देन वेल निकिंग पेरेंट्स आर लेस, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉस्ड सीड डेवलपमेंट, हाई टेक्निकल फी फॉर रिसर्च हाइब्रिड्स एंड हाई सीड कॉस्ट एंड पेरेंट्स, क्योंकि अगर हाइब्रिड ग्रो करना है तो उसके लिए एक्सटेंसिव इनपुट सप्लाई करना भी ज़रूरी है। तो हम अगर ट्रायल एंड एरर मेथड करते जाएंगे तो लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होगा, हमें रिसर्च एक्सपेंसेस को निभाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पुअर और लो सीड सेटिंग, दैट मीन्स जेनेटिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मैचिंग पेरेंट्स, सिंगल वर्सेस मल्टी tillers, then 3 lines and 2 line parent complexities, non-availability of improved parental lines with high seed set, then high environmental fluctuations and problems in fertility, sterility maintenance, cytoplasm effects or biological penalty, then CMS susceptibility to disease and pests. For example, CMS Texas CMS maize में जो susceptible हो गया था Helminthosporium maidis को। तो और प्रॉब्लम्स है कि प्रॉब्लम इन मेंटेनेंस ऑफ ब्रीडिंग टू एंश्योर क्वालिटी सीड्स ऑफ पेरेंट्स, देन सीड चेन डिसरप्शन, ओनली स्पेसिफिक जोन्स आर आइडियल फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया है और सदर्न इंडिया को आप दे लीजिए, तो हाइब्रिड मेज़ का जो अवेलेबिलिटी है नॉर्दर्न इंडिया में रिलेटिवली लेस है। इवन नॉर्दर्न इंडिया ट्रेडिशनल बेल्ट ऑफ मेज़ है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे सीड कंपनीज़ नहीं है, इसके वजह से हाइब्रिड्स रियली कम है। अगर हम राइस की बात करें, हाइब्रिड राइस 1992-96 में बहुत ही एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट था, लेकिन आजकल नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड सीड बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और इसको बनाने के लिए बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज आगे नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एलिवेटेड कंज्यूमर डिमांड। मतलब एक साल में कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा होता है, एक साल में कम हो जाएगा, इसके वजह से कोई भी प्राइवेट कंपनीज इसको टेक ओवर करने में बहुत ही आगे पीछे देख रहे हैं। देन वेजिटेटिव फिक्सेशन नॉट फुली एक्सप्लॉइटेड, वेरिएशन इन नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन लाइक जीनोटाइप, एनवायरमेंटल और सीजनल थिंग्स, देन रॉ रेशियो स्टैंडर्डाइजेशन, maintenance of CMS lines free from pollen shedders, introduction of new diseases through exotic CMS parents, high cost of hand emasculation and cross pollination. I hope this information is helpful for you. If you like this video, please do not forget to hit the like button. Please subscribe my channel. Keep on liking, commenting, sharing. Thank you once again.